So one of my customer was sitting right next to me. He spoke that thing. So he was basically defending suicides due to peer pressure. डिफेंडिंग सुसाइड। So sometimes what happened, and he was a very nice, very genuine person. He just spoke it गलती से. गलती से मुंह से तो मैंने निकल उसको गया। बोला, हाँ. और हम रूम में आए, मैंने बोला यार क्या बोला तुमने? कहता भाई मेरे को भी समझ नहीं आया मैंने क्यों बोली वो चीज, है ना. So there is one difference between GD1, GD2 and GP, that GD1, GD2 में people take time to think and then give an idea. GP में सबके पास कुछ ना कुछ होता है बोलने के, because all of them have an idea. So unlike GD1, GD2, GP का group discussion is very fish market. वहां पे सब बोलते हैं और सबके पास कुछ कुछ है और सबको लगता है वो सही है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि कोई सही है कोई गलत है, बट एवरीवन फील्स दैट दे नीड टू पिच इन देयर आइडियाज, राइट. आई रिमेम्बर मेरे फर्स्ट एसएसबी में, तो आई वाज जस्ट नंबर 12 शायद, है ना. और द अदर पर्सन 18 था या क्या था. हम लोग ऐसे सेमेस्टर के में बैठे हुए थे, मैं एक कोने में वो दूसरे कोने में, और हमारी ऑलमोस्ट लड़ाई ही हो गई थी कि जो इंजर्ड मैन है उसको पास के विलेज में लेके जाया जाए या दूसरी सिटी में लेके जाया जाए. हम मैं चेस नंबर 24 था. एंड व्हाट हैपेंड वाज, जीटीओ सेट की लाइन से खड़े हो जाते, तो 18 से 24 शायद वाज आवर ग्रुप. ठीक है, तो अब हम लोग लाइन से खड़े हो गए. देन मैं एंड में, मैं 24 वाज द लास्ट पर्सन हु गॉट स्क्रीन्ड इन. तो जीटीओ सेड कि पिक अप व्हाटएवर मटेरियल इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्टार्ट. एंड इट हैपेंड टू बी मेरे सामने लोड था, तो मुझे लोड ही उठाना पड़ा. वरना भाई तो मेरे को बोल के भेजे थे कि रोप हो सके तो उठा लेना या फिर स्टे फ्री हैंडेड. ठीक है. लोड मत उठा लेना भाई। जीटीओ सर ने इंस्ट्रक्शन दी कि जो सामने उठाओ, हमें उठाना पड़ेगा, सीनियर है उन्होंने बोला है, राइट. तो वो फिर उठाना पड़ा लोड मेरे को. बट देन पीजीटी 1 में मैंने किसी और को दे दिया कि भाई लोड भाई उठा ले. बोला भाई ये उठा ले तू, मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ. तो आई हैव पगला तो नहीं जाता लिसन टू अथॉरिटी देख के। स्टोरी. हाँ, लिसन टू स्टोरीज की किसी ने बुलाया अपने सबऑर्डिनेट्स को कि आओ, और वो लोग आने में देर लगाए तो उनसे पुशअप्स करवा दी कि भाई तुम जेल से क्यों आए, कहाँ उन से पे ले भाग के लिया। आए जेल. हाँ। हाँ, तो कमांडर का मतलब ये नहीं कि अब सारी अथॉरिटी आ गई. समटाइम्स दिस जीटीओ इंटरफियर्स कि ओके कमांडर सबऑर्डिनेट्स को कि दिस आइडिया वोंट वर्क. कमांडर सेज कि आई एम योर कमांडर, ही इज नॉट लिसन टू मी, डू नॉट लिसन टू द जीटीओ. यार ही इज जैसे. देयर टू डिस्ट्रैक्ट अस, हाँ. डोंट डोंट हाँ. लिसन टू हिम। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये एपिसोड 2 है। और एपिसोड 1 में मैंने प्रशांत को बुलाया था। प्रशांत से बहुत सारी चीजें की डिस्कस की थी, उसकी एसएसबी की जर्नी के बारे में हम लोगों ने जाना था। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो रेकमेंड हुआ था, उसके बाद उसने 3 स्क्रीन आउट्स देखे, और फिर फिफ्थ अटेम्प्ट में फिर से रेकमेंड हुआ फॉर टीजीसी 137। और फाइनली उसकी मेरिट इन भी हो गया, वो ऑल इंडिया रैंक 3 आई है और रेडी टू ज्वाइन आईएमए है। तो वंस अगेन प्रशांत, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू भैया. यार प्रशांत, हम लोगों ने जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें डिस्कस किया था तेरी जर्नी के बारे में। फिर अब हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया था स्क्रीनिंग में क्या अप्रोच होना चाहिए, ओआईआर की क्या इंपॉर्टेंस है, पीपीडीटी में हम लोगों को स्टोरी कैसे राइट करनी चाहिए और उसको नरेट कैसे करना चाहिए, और जीडी को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं ताकि हम लोगों का इंप्रेशन बन सके और हम लोग स्टेज 1 क्लियर कर सके। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेज 2 के साइड टेस्ट के बारे में। उसमें टैट वैट एसआरटी और एसडीटी के बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो प्रशांत, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीटीओ के बारे में और पर्सनल इंटरव्यू के बारे में, और फिर हम लोग पहुंचेंगे कॉन्फ्रेंस पे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। जीटीओ से शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरियस टास्क आते हैं। तो ये शुरू करने से पहले यार मैं पूछना चाहूंगा, यार तेरा जेल आ चुका होगा अब तक तो। लाइक द जेल इज हियर, बट जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं ना फॉर द पर्टिकुलर कोर्स, अच्छा वो अच्छा। अभी नहीं आए. जेल इज ठीक है, और प्रद्युमन भी आ रहा है ना, टर्म ब्रेक पे। हियर. आने वाले 1-2 दिन बाद ही will be. चलो बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों, यही थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया था, इसलिए हमारा जो एपिसोड 2 है थोड़ा सा लेट आ रहा है। ठीक है, तो बहुत टाइम निकाल के हम लोग ये एपिसोड बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं यार। ठीक है प्रशांत, सबसे पहले हम लोगों को जीटीओ में आता है जीडी 1 एंड जीडी 2। ठीक है, तो जीडी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है। हम लोगों को पता है कि ये बताया जाता है कि जो जीटी होता है उसके जो शुरुआत के 4 टास्क होते हैं वो सबसे मेन होते हैं, और जीडीज उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है लाइक जीडी से रिलेटेड, कि सुरेश पूछ रहा है कि यार अप्रोच क्या होना चाहिए करंट अफेयर्स को लेके। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में भी डिस्कस किया था। और सिमिलर क्वेश्चन है कि अखिल का,
कि विच प्लेटफॉर्म ही फॉलोज फॉर करंट अफेयर्स एंड लेक्चरेट प्रिपरेशंस। लेक्चरेट की बाद में डिस्कशन करेंगे। एक और सिमिलर क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल इन्वेडर्स पूछ रहा है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीडी। तो ये जो सिमिलर क्वेश्चंस है ना, इनको तू बता दे अपने इस अप्रोच के साथ कि तेरा कैसा गया था जीडी और तूने कैसे हैंडल किया था एसएसबी। Right. So my personal experience, my first and second both the GDs when I went for the stage two now, the GD1, GD2 went smooth. In the first attempt, it was partially because I had some knowledge of the topic. Second topic was a bit, not very factual based. You just had to apply your mind and come up with ideas. In this recent one, since the budget had come, so the topic was on budget only. So फॉर्चुनेटली मैं पढ़ के गया था बजट का आगे पीछे क्या था, तो आई कुड से इट आउट लाउड हाउ विल बी प्रोग्रेस. So the GDs went well. Apart from the topic of the GDs, how do you study for it is, I would say, stay consistent with your current affairs. And by that I do not mean कि 15 दिन का पढ़ के चले गए. By that I mean at least 2 months prior to your SSB. So for people who are really into this, they would just stay updated with current affairs, whatever is happening. So my personal approach used to be that I used to write daily news, and writing that is different. But then when the AFCAT and CDS comes, right? So at that time you tend to put SSB on second and focus on your returns. So let us say my SSB was in February, 9th of February. That was around the same time when the AFCAT was there. Was probably on 26 or something. So I was preparing for my AFCAT when the SSB date selection came. So I had made sure that if my SSB is February, I was well versed with the current affairs of like 9 days of February, then my January and December, and what about November because I had went for an SSB. So this is my strategy. Very well versed with news from 2 months back from their current date of SSB. How do you go for current affairs? Is I had said in my previous video there are 3-4 channels: My Government India, right? The Tatva India, and barely opinionated. For psych it was the Better India. So these three sites if you follow, it is more than enough that you get to know what is happening in your world. And it is like the benefit of Instagram algorithm. Once you start liking such posts ना, और ऐसे पोस्ट आ जाते हैं आपके फीड में कि कहाँ पर क्या हाँ। चल रहा है. So if you start studying from Instagram will help you to study. That is what I can say. So you will get to know what is happening. आपको search वाले section में you will get such posts. Apart from that, how I used to use was, there's this website EMA's training ka, and they daily upload news on that. There's one PDF of 6 to 7 pages, they cutouts of newspaper. I used to just read that much and make notes as per of my own convenience. So these are two ways how I used to study for my current affairs part that eventually helped me in GD. As of for GD1 and GD2, there are two kind of GDs that I feel. One is like a purely factual based on something static, and then there's something current affairs, like in my case it was budget, right? So something like that. So what you can do is, if you're studying for your AFCAT and CDS, you will have some static knowledge. While you are preparing for current affairs, you will get well versed with the current affairs part. So both of your GD1s and GD2 will get summed up if you are preparing well for your returns and this news thing. Apart from that, there's sometimes topics that do not require factual knowledge at all. They just require you to apply your mind and come up with some logic to what should be done. Sometimes, see, I remember the second GD of my first conference time was that suicide cases are increasing these days in youth. What do you think is the possible reason? Something like that. And one was that peer pressure, one was less availability of uh, infrastructure or opportunities, something like that. There was another uh, parental pressure or education system, something or the other. So ऐसा कुछ था. इसमें you don't actually need facts. You just need to pick up the right lead and say points on it. Right. So there are three things: current affairs, your static knowledge, and some application of your mind. How do you tackle your GT? Now coming in SSB, and while people are sitting in a circle,
I feel there's no hurry to open in the GT. Because that is like if there are 10 people, at least 7 of them or 8 of them would be doing that. So there's no hurry to enter or start the GT. However, you should be second or third to speak. Don't be very late. चौथे पांचवें नंबर पे बात कर रहे हैं. Do not do that. Maximum three. Third position should be yours to enter into the GT. And there's a lead. There will be three leads. Pick one lead which you feel you can speak the maximum on, first of all. If you think the topic is difficult for you and you're not able to think which is the right or which is the wrong lead, pick whatever you feel you can speak the maximum on, firstly. If you have knowledge of almost all the three leads, then you can choose a lead which you can inculcate others in them. So, like in my first GD of my first conference, so it was what is the main threat to humanity? So one was AI, one was global warming, and some third was uh, some terrorism or something like that. So no, it was some water related issues, something like that. So I had picked up global warming because it can include all this water related thing, and then this AI thing, right? If we are very technologically advanced, but we are not infrastructurally advanced, how will you implement the technology? आपने बना तो बहुत कुछ दिया, बस reality में you do not have the that mechanical or electrical engineering skills to like develop a vehicle or building, something like that. Any power plant, something. So on ground technology is also very important. AI is very important, but on ground implementation is also very important. So pick up a lead, I feel, which on which you can somewhat include all the both the other two leads. ये थोड़ा सा उसमें भी बोल दिया जाए, थोड़ा सा इसमें भी बोल दिया जाए, right? So that is how I pick up the lead. And in the second GT, what happens is there's no choice. In the first one, there's a choice that GTO can say there are two uh, topics. Which one do you want? And then people will raise hand. In the second one, there is no scope of choosing. So whatever is in front of you, you have to deal with it. So the only way is to study for that, right? Or just picking up the lead, I feel is very important because uh, oh, right. I remember the second in my second GTO first conference ना. So some guy had picked up peer pressure or something, and then वो एक कुछ होता है ना, खुद ही deaths ले लेना कोर्ट से मांग के. Some word is there for that. I don't remember. So one of my gentlemen who was sitting right next to me, he spoke that thing. So he was basically defending suicides due to peer pressure. डिफेंडिंग सुसाइड. So sometimes what happens, and he was a very nice, very genuine person. He just spoke it गलती से. गलती से मुंह से तो निकल मैंने गया. बोला हाँ. और हम रूम में आए, मैंने बोला यार क्या बोला तुमने? कहता भाई मेरे को भी समझ नहीं आया मैंने क्यों बोली वो चीज, है ना? तो pick up a lead which you feel कि can speak the most and is the right solution. Sometimes there are all three of them are right. Sometimes two are there. कभी कभी एक होती है which is like a very vague. So picking up the lead is very important. Now that you are done with the lead, what is the conduct? So as I said, entering first is not very necessary. There might be points of it, but it is not the point of recommendation. Right? You can open second or third as well, not beyond third. That is what I personally feel. So once you are entering a GD, in your first opening sentence should be very specified so that a GTO would know कि आपका lead कौन सा है. So do not start giving out facts. Then you say कि this was my lead, right? So whenever you're opening, so let's say I'm talking about global warming, okay, which is like which I feel is the biggest threat to humanity. So I would say, gentlemen, I feel global warming is the biggest threat to humanity because जो मेरे को extra point देना है. But no opening sentence included global warming. The So lead. the GTO would know okay, this candidate is talking about global warming and not the other two leads. So that is very important that you specify your lead in front of the GTO in very early, whenever you're opening the GTO. Once you're done with that, मेरा personal rule ये है कि keep listening to the group so that you can come up with new ideas. Sometimes people ask कि यार हमने तो पढ़ा नहीं है, GD में बोलेंगे क्या? तो वहां पर if you're listening carefully ना, किसी की कोई बात सुन के कुछ दिमाग में आ ही जाता है. अगर आप आउट अगर ऑफ आप टच भी हो करंट हाँ अफेयर से, अगर आप यहाँ पे अगर आसपास आप चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसने ये बोला है तो ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने या सुना था. राइट,
कुछ तो आपको दिमाग में आ ही जाएगा, दिस इज समथिंग यू हैव heard somewhere, and you can come up with points. So if you're out of points, listen to other people. You will get to something in your mind, because no one like has so much knowledge on all the topics कि कोई भी टॉपिक आ जाए उस पर वो 15 मिनट बोल सकता है. No one studies that much, and if you're studying that much, it is very good. So if Like Pradyuman. come up with, अरे he didn't used to study a lot. वो ऐसे ही करते थे. He had good starting knowledge, and he used to have a good amount of basic current affair knowledge ताकि इंटरव्यू में बोला जा सके, right? That was also लेकिन उसके I पास used to उसका रीडिंग हैबिट था भाई. हमने उसको हाँ एसएसबी में हाँ पढ़ते देखा है. हाँ हाँ, that is what I was about to come, that reading habit not necessarily needs to be of books. People generally think reading means book reading. No, like as I said in my previous video, I guess I had said कि मैं तो बुक्स पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ता हूँ फॉर माई क्विजिंग. That is also reading. You get knowledge from there. So whatever reading, if you have a reading habit of newspaper, articles, news only, everything that all of that includes like that is your knowledge. कभी ना कभी वो काम आएगा किसी ना किसी तरीके में. Just make sure that you are reading the right thing. So if you have that knowledge now, so it is easy to come up with ideas. And how I used to come up with ideas is I used to listen to the group and give idea then and there. जो मैंने पीपीटी के लिए भी बोला था कि सुनो और उसी टाइम सोच के आइडिया दो. Listening and thinking and giving idea continuously keeps on going in your GD1 and GD2. About opening and about contributing, I used to make sure that there's at least gap of two people between. So if I'm speaking now, I will let two other people speak, then I will speak again. So that ऐसा ना लगे कि ये बंदा बोल ही नहीं रहा, और ऐसा ना लगे कि यही बोले जा रहा. यही बोल रहा है सिर्फ. It should be it should be an active contribution, but it should not look too much or it should not look less as well. So that is what I used to do. दो लोगों को बीच में बोलने दो. And sometimes there are people who do not stop at all, right? बोलते ही चले जा रहे हैं. So उसके लिए what I used to do was कि let the person speak two sentences. If he's still not stopping, you start. Because the assessor has capability of listening to two people at same time. Now he can listen to 10 people as well. Okay. So give that person space. Do not fight anyone. If someone is interrupting you again and again, just ignore it. Because he's doing damage for himself, not for you. Okay. So if you feel that there is someone who in the group who is creating hindrance for you, right? And do not give him a lot of your attention. आप अपना काम करते रहो जो आपको करना है. ठीक है. And so this is what same for GD1 and GD2. I feel that you give your ideas. You first of all listen to the narrative, pick up a right lead on which you feel you can speak on, and which is the right solution if there is a problem statement in the question. And then you open either first, second, or third. Then when you're opening, you specify the lead you are giving to the GTO. Then let one or two or three people speak between your turns, and do not come to a conclusion. There is no need to come to a conclusion in GD1 and GD2. Also, do not convince other person that you are right and he is wrong, or your lead is right or his lead is wrong. There is no need of that. It is a discussion, so no one has to be right or wrong. You just have to give your ideas, listen to people, and give ideas. And if someone is giving ideas on some different lead, appreciate if he has given a good idea. There's no need. Is no one said that उसने अगर अलग लीड पे अच्छा आइडिया दिया तो आप उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे. Yes, you can acknowledge easily कि आप दूसरे को ने अगर अच्छा आइडिया दिया है, you can say that okay, gentlemen, very valid point or something like that. Right? Then one last thing, people say कि is it necessary to speak on one lead only? हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत लोग इंपॉर्टेंट बोलते हैं है. कि तीनों लीड पे. हाँ. हाँ, तीनों लोग. I feel sticking to one lead is important. However, if someone has given some point and you liked it, and you have a thought which you can add on, you can add to someone else's lead, but stick to your lead. जैसे PPT में बोलते हैं ना, you can switch to Hindi, but come to English As soon as soon as as possible. come back to the, yeah. So you can give idea on your second or third lead, but come to your lead as soon as possible. Do not deviate from your lead. Right? So it is very valid to give idea. मेरे हिसाब से it is very valid to give one point on some second or third lead, but stick to your first lead.
जैसे अगर कोई बंदा लीड अब दूसरी लीड पे बात कर रहा है, तो अब उसको अपना पॉइंट बताने के लिए हम लोगों को उसमें अगर कूदना है हम लोग को जीडी में, तो हम लोग को उसके पॉइंट्स थोड़ा सा मतलब उसके साथ स्लाइड करके कि हाँ वे आई अप्रिशिएट यू जेंटलमैन, बट इन माय ओपिनियन लाइक दिस, ऐसा करके उसके भी पॉइंट्स अगर तुम्हारे पास हैं उस लीड से रिलेटेड, तो वो बोल के वापस अपने पास आ जाओ, अपना जो मेन लीड है। एंड डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक बट। बट जो वर्ड हम्म। होता है BUT, इट मीन्स हाँ, तुम तो ठीक बोल रहे हो, लेकिन मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। लेकिन मैं When ये someone है, is हाँ। हाँ। acknowledging yet rejecting the other person's ideas, do not use हाँ। that word. You can say adding to what you said or in continuation to what you said. ऐसे कुछ phrases use करो, but do not ओके use ओके। but kind of words. ओके, ठीक है, तो जीडी हमारा हो जाता है। एक बार क्या हुआ है हमारा ना, जैसे तूने बताया कि जीडी 1 में हम लोगों को 2 टॉपिक देते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने जीडी 1 के 2 टॉपिक दिए थे, उसमें से एक इंटरनेशनल था एक नेशनल था, तो हम लोगों ने नेशनल वाला चुन लिया, ठीक है। तो जीटीओ बोलता अच्छा तुम लोगों ने एक टॉपिक उसमें से छोड़ दिया था, एक काम करो मैं दूसरा टॉपिक नहीं दूंगा जीडी 2 के लिए, वही वाला टॉपिक तुम्हारा जीडी 2 का है, लो डिस्कस करो। तो ये ना ऐसे लोग का जो उनका मन करे, दे आर सीनियर्स, जो उनका मन करे वो करेंगे, हमें फॉलो करना करेंगे है। करेंगे But it करेंगे। is also like fun because I have seen, like I've been to only 2 conferences, but both of my GDOs are very good people, and they made sure that we're enjoying our G whole हम्म। day, 2 days. ये बहुत ही फन They took एक्टिविटी us होती है very जीटीओ। actually, और मतलब if you look at the task particularly, they are serious things, but when you are in there doing that, it is very fun to do. हम्म। हम्म। चल ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपना आता है जीपी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो अखिल पूछ रहा है कि जीपी में क्या अप्रोच रखें, और अपना सोल्यूशन पे ही रहना है या जिसका सही है उसको सपोर्ट करना है। तो शुरुआत से बता So कि तेरा जीपी में क्या अप्रोच रहता है, वैसा पूरा शुरू से। So there's one difference between GD1, GD2 and GP, that GD1, GD2 में people take time to think and then give an idea. GP में सबके पास कुछ ना कुछ होता है बोलने के, because all of them have an idea. So unlike GD1, GD2, GP का group discussion is very fish market. वहां पे सब बोलते हैं और सबके पास कुछ कुछ है और सबको लगता है वो सही है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि कोई सही है कोई गलत है, बट एवरीवन फील्स दैट दे नीड टू पिच इन देयर आइडियाज, राइट? So I'll come to this in the end when we will come to the GT part. So GP, how it is conducted is, first of all, the GTO introduces you to the board, to the map. So there's a one black uh, border. All of the things are inside of that. And outside of that, there are roads which are leading to 2 different towns, right? And there's an N with an arrow upwards written in black, which shows the north is in the upper part. One of the yellow side is the countryside, and then there are different colors which the GTO introduces you to. So there's blue is about water bodies, green is for the forest area or the greenery, and red is man-made structure. And in roads there are different kind of roads. There's a one broad matted road which is a bold red line, and then there's two dotted line which is for two-wheelers and single vehicle, हम्म। and this Pagdandi which is only one dotted line. After that, there is a railway track is also there. Two parallel black lines with हम्म। black lines joined between them. That is a railway track, and there is this bridge called culvert. जो हम्म। क्रॉसिंग होती है ना, रेलवे क्रॉसिंग, हाँ दैट इज हाँ। कॉल्ड अ कल्वर्ट. It is in this shape. You will know how it looks. So that is a culvert, and these are the main things which the GT will introduce you to in the board. And then there will be names of landmarks. Let's say there's an old temple or some forest reserve विलेज area, नेम। some हम्म। villages will be there, right? So he will first introduce you with an app. He has this long stick with him. So he points out, and after when he's done with introducing with the map, if he asks any questions, do not ask any questions. He would have been very specific about what he's telling. So there's no need to ask questions. उसने सब बता दिया. Unless you have a very genuine question or you could not listen to anything, तब you can ask. Then he reads out a narrative in which there will be 4 problems, and we will have to tackle them accordingly. So generally, you would be people going from one place to another. Let's say basketball uh, टूर्नामेंट है। team or some students who have went for some science. Uh,
event, etc., some friends party, XYZ. And you would have to reach somewhere by some particular time. So then the GTO narrates the whole of uh, the narrative. उसमें it goes something like that. You are a group of 10 people going from X village to Y village. You were stopped somewhere when some person came and told कि कोई injure हो गया, ठीक है, and then some other person will come and say कि there are some miscreants who are doing some big damage. Let's say railway track को उन्होंने खराब कर दिया है, ठीक है, and then the same miscreants would have kidnapped some kid and asking for ransom, something like that. And then there would be some hut जो टूट गई है, some buffalo who is in the ditch. So, and then there would be some transport or some facilities provided there. And eventually the narrative will say that time right now is, let's say, 3 p.m. and you have to reach your hostel by 6 p.m. as young men slash women. What would you do? So this is a basic structure of the narrative. There would be four problems. How do you prioritize? The problem is, first, wherever there is an immediate medical emergency, that should be a first priority. So in almost all the GPs, there would be some guy who is injured, right? So that is your first priority. Second priority, how I personally choose is, first, both the priorities are generally of mass destruction. So in my first GP, some miscreants had broken the railway track and they was about to poison a water tank which goes into a whole city. तो ट्रेन में भी लोग मरेंगे, पॉइजन चला गया तो वहां पे भी सिटी में इफेक्ट होंगे लोग. तो both of these are points of mass destruction. How do you prioritize them is based on which is happening first. And generally जितना I have seen GPs, I've heard from people, generally एक problem में there is time, in the other one it is there's not. So we can like easily determine which one is our second priority, and obviously the other one is the third priority. Fourth priority would be the one जहाँ पे some mild thing has happened, कुछ हट टूट गया, गाय गिर गई, बैग छूट गया, something like that. So this is how you categorize the priorities, and then you look for resources uh, through which you can get these things done. You can solve the problems. So one which I obviously assume हर जगह is some lift from the main highway. ठीक है, वो तो मैं मान के चलता हूँ कि मिल जाएगी, ठीक है. दे ही देंगे, लोग And अच्छे लोग हैं, राम राज्य है। अच्छे लोग हैं, again, right. So अच्छे लोग हैं, दे देंगे. So that is what I assume. Then there is one problem जहाँ पर there is a nearby village, right? So you can take men from village, you can ask for their help, and they can just go, and you can assume all the things you require for that particular task. The villagers can bring it, right? So if you need ropes or you need to capture some miscreants, then the man force can be लाठी। used. हाँ, ये सब use हो सकता है, right? So the manpower can be used, and then for the third priority, look, whatever the issue is, see, GP is something, there is no particular layout कि ये कर लो तो हो जाएगा. Whatever the problem statement, the narrative, the board is, on the basis of that you need to apply your mind then and there. So whatever the third problem is, you can for some resources how you can deal with it. And sometimes आपका जो van होता है उसका टायर खराब होता है. Sometimes your van is still functioning, right? So you can use your own vehicle. If there's a bus, there will be a medical help kit in it, so you can use that. And for the last priority, is two people are enough to do that. Whatever is very mild. So once you are done with that, you get to the division of the group. So in division of the group, I personally divide my whole team into three subgroups. So that the first, uh, for the injured person, I keep two people. Two people are enough because the two people, the injured man and the person you are taking lift from, there are three people. So it's more than enough to take care of it. And for second, for whichever group there is this manpower is required, right? So for that, I generally take four people and four people for the other one. The 4 plus 4 plus 2 gets to be 10. So that is how I divide my group. Generally, it again depends upon what your GP ka question is. Based on that, you can divide accordingly. But I personally keep it for three groups. I do not make two groups because the force problem is very mild and it can be catered later, right? It is not causing any immediate harm. Plus, your group one
doesn't has a lot of work as compared to group 3. तो इंजर्ड मैन को बुलाने ले जाने में कितना 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा, उससे ज्यादा क्या लगेगा. बट जनरली यू गेट अ 3 घंटे का टाइम फ्रेम from your time right now to whenever you have to report. You have 3 hours, right? So the company of the group can go for the second for the last problem and cater it. हम्म. So this is how I divide my groups, and then you get into the detail of how do you solve. उसमें while writing I prefer जैसे अपन SRT में कॉमा कॉमा करके लिखते हैं ना, that is how I prefer, ज़्यादा लंबा ना लिखना पड़े. And there is one thing which I add, which is total time and total distance. So sometimes there are people who write one way का, ठीक है, sometimes who write total आने जाने का. तो it should be journey based. As in, sometimes what happens is you take a group one, engineer takes it to some city, admits them, and he stays there because आपका hostel वही है. They do not हम्म. need to come back. Sometimes you have to come back to your original position जहाँ पे भी आपको engineer मिला था. तो इसमें ना what I personally do is मैं total journey जाने से लेके point A to point B, whether it is हम्म. this different city or it is the same starting point. If it's a हम्म. different city में एक direction का total time और total distance. हम्म. If it is going to some city and coming back, then मैं पूरा distance और पूरा time लिखता. ओके. हाँ, मैं one way का नहीं लिखता, right? Because the second or third team will have to meet some place. उनका तो आप total time लिख रहे हो, एक का हम्म. आप सिंगल एक डायरेक्शन का टाइम लिख रहे हो, तो दिस बिट कंसिस्टेंसी नहीं आती, लाइक सिमेट्रिकल नहीं है चीजें, मतलब हाँ, आप किसी के लिए अलग symmetrical. क्राइटेरिया रख रहे हो. हाँ. है ना. वे जीटीओ विल थिंक कि इसने स्पीड 2 और 3 की तो इतनी कम है, 1 की इतनी ज्यादा कैसे हो गई, राइट. हम्म. तो he will question himself and your sheet. So and that is how I do it, and then I decide a common meeting point जहाँ पे जितने भी groups हैं मिलते हैं, then they can हम्म. go, and I tend to let my group arrive to the destination 15 minutes prior to the timeline. ठीक है, ओके. उतना मैं मान के चल रहा हूँ कि उससे पहले आपको पहुंचाना है. यू डू नॉट हैव टू बी लाइक डॉट 7 बजे आप उनको वहां पहुंचा रहे हो, ये यू कैन नॉट डू. ठीक है. तो बी अ बिट लिटिल अहेड ऑफ टाइम, ठीक है. लेट नहीं आना चाहिए अगर आप किसी दोस्त लोग से मिल रहे हो. बी ऑलवेज ऑन टाइम, राइट. तो लाइक दैट यू अराइव ऑन टाइम 15 मिनट्स प्रायर, 30 मिनट्स प्रायर, अगर आपका सॉल्यूशन क्वेश्चंस माइल्ड है, प्रॉब्लम्स माइल्ड है, बट अराइव बिफोर टाइम, नॉट डॉट 7 बजे. Okay, so that is my approach. Now coming to the written part. So once the GTO has narrated now, you get another 5 minutes to read the whole narrative yourself. What I do while the GTO is referring now, I tend to identify the problems and दिमाग में मैं बना लेता हूँ कि how do I divide my group. उस time I do not get into the details of क्या क्या resources चाहिए होंगे, ठीक है. Because this time you need to focus on that, ठीक है. Then when I have the sheet ना, उस time पे I look on details, factual details. What is the time right now, ठीक है, where do you have to be, what are the resources, and things like from which city you are going. The names of the cities are very important if you can retain them in your mind and write in your sheet. So things like these details I focus on when I'm reading the narrative, because उस time पे you can look at the narrative and refer to the board एक साथ. When the GTO is speaking, you cannot go back or rewind and जो GTO ने बोला था वो सुनो. तो उस time में when the GTO is reciting, get a very clear understanding of the narrative, so that when you are reading, आपको रीड करते टाइम समझने की जरूरत ना पड़े कि नैरेटिव है क्या. आपको पहले से समझ आ जाना चाहिए ताकि आप डिटेल्स पे फोकस कर सको, ग्रुप डिवीजन डिसाइड कर सको, रिसोर्सेज डिसाइड कर सको. And what I personally plan on to do is, by the time the GTO takes away the narrative from me, I I feel that उस time तक हमारा solution तैयार हो जाना चाहिए, so that when the 10 minutes start, all you have to do is just move your hand and do not run your brain. This is again जैसे मैंने पहले बोला था, सेम एज पीपीटीटी और टैट. जब आपको बोला गया है कि 4 मिनट में लिखो, तो आप 4 मिनट में सोच क्यों रहे हो, है ना. तो it is very very similar. I I just make sure that I complete my solution in my head before the narrative is taken away from me. So summing it up, when the GTO is narrating the whole narrative, have a good understanding कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप physically कहाँ पे हो. अच्छा, also focus on what is the starting point, where you are when everything started to happen. Like location, sometimes it is a tea stall or something like that, some resort.
तो जस्ट रिटेन दैट पोजीशन, because वहीं से आपको सारा बाद में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब वही भूल गए आप खड़े कहाँ हो, हाउ विल यू कैलकुलेट द डिस्टेंस, राइट? So that thing is very important. Once I am done with understanding the narrative, when the sheet is in front of me, I take 5 minutes to imaginarily curate the whole solution. When I'm looking at the narrative, मैं like sometimes क्या होता है ना कि आपके दिमाग में वो होता है, फॉर्मेट होता है, एंड आपको उसमें चीजें भरनी होती हम्म है। तो लुक एट द नरेटिव एंड कंप्लीट दैट इमेजिनरी फॉर्मेट इन माय माइंड। वंस इट इज डन, मेरे दिमाग में एक पूरा शीट होता है A4 साइज, जिसमें लिखा हुआ होता है सॉल्यूशन। एंड जैसे आप कॉपी पेस्ट आप किताब में से लिख के पेज पे लिख रहे हो, लाइक हम्म दिस द नरेटिव इन माय माइंड दिमाग से इज बस उसको शीट पे उतारना है। शीट को होता है। That is my personal approach. So how, coming up to the sheet, how do I write it is, first of all, जैसे अपन बचपन में लिखते थे ना एग्जाम का नाम बिफोर राइटिंग द होल 10 पेज, तो राइट आई राइट जीपी सॉल्यूशन, देन आई राइट प्रॉब्लम्स विद प्रायोरिटीज, उसमें प्रॉब्लम्स कर दी 1 2 3 3 या फिर P1 P2 P3, देन आई राइट रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज में जो भी आपको लगता है कि हो सकता है यूज, writing while writing problem with priorities, you can do this one thing is that you can write where the problems are physically, as in uh, injured man near this, or kidnapped kid in this village, something like that. The more precise you can be while writing a priorities, the better it is, because it shows a retention power. The candidate has still remembers the whole narrative very clear in his mind, and he can just point it out कि क्या चीज कहाँ हो रही थी, he is actually into the action. ठीक है, so retain as much as you can the factual things that are there, whether it is the time, physical things, all of it. Then resources, as I said, when you're already done with your solution, so you would obviously know what are the resources, right? That 5 minute, when you are reading the narrative, come up with the resources and then write them down. उसके बाद solution with time and distance, right? Then I write, we are a group of 10 students going from this X place to Y place. Again, retention is important. So you would know कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ठीक है? हम्म Then I write at this place जहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है? We came up with 4 problems, and we will divide ourselves into 3 groups and tackle the problem simultaneously, not one by one, to save हम्म time, obviously. हम्म Then I write problem one, उसका subgroup one, and I write कि injured, 2 people will take injured man, ठीक है, take left from highway, go to XYZ जो भी city का hospital है, admit him, call his family, come back या फिर stay there, based on जैसा भी आपका situation है। ऐसे हम्म कॉमो कॉमो करके I write, and whenever I start writing the problems ka solution, I write number of people. 2 people will do something. 4 people will do this. So the GTOs will know in the opening of the solution that this is the size of the subgroup. Okay. हम्म So if there is a kidnapping, I would say 4 people will take men from XYZ village, set up a trap, rescue the kid, hand the miscreants over to police. हम्म इतना छोटा है, राइट? एंड देन बीच में नीचे टाइम डिस्टेंस में लिख देता हूँ, ठीक है? और हर स्मॉल जो सॉल्यूशन होता है, सब ग्रुप का जो सॉल्यूशन होता है, उसके बीच में तो सॉल्यूशन टाइम डिस्टेंस, ऐसा है, राइट? ठीक है, देन यू आर डन विद योर सेकंड थर्ड प्रॉब्लम, देन यू कैन राइट फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप जो भी जल्दी फ्री हो जाए, सब ग्रुप लेट्स से 2 will go to the hut or go to the dish and get the buffalo out, ठीक है? एंड will उतना लिख दे, देन ऑल द ग्रुप्स जितने भी बचे हैं, अगर कोई पहले से वहां है, देन द 3 ग्रुप्स, द 2 ग्रुप्स, और अगर सारे लोग बोर्ड में ही हैं आपके, देन ऑल हाँ द 3 ग्रुप्स विल reunite at this place, जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो भी आपका कोई और पॉइंट भी मन करे, ठीक है? हम्म विल टेक द, या तो वैन आपका, बस वस जो भी है, विल टेक द व्हीकल एंड रीच XYZ जो भी आपका हॉस्टल का नाम है, बाय 6:30 और 6:45 इफ योर ड्यू टाइम इज 7, आधा या हम्म 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले। So this is the layout of my whole writing of the sheet, the solution of the GPE का। तो इस इससे क्या होता है कि योर रिटेंशन इज शोन, ठीक है? योर क्लैरिटी इन योर गिविंग आउट योर आइडिया ऑन द पेपर, वो इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है? एंड हाउ द जीपी शीट इज असेस्ड मेरे हिसाब से इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑब्वियसली द प्रॉब्लम्स विद प्रायोरिटीज। इफ यू डू हम्म नॉट हैव योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट, आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू इंस्टाग्राम लैंग्वेज की क्या होता है अगर आपके हम्म प्रायोरिटीज स्ट्रेट, right? So your priorities should be very straight even in life, हम्म okay? Then you should understand what are the resources you can, you know,
आइडेंटिफाई एंड यूज देम इन व्हाट वे, ठीक है। इसके बाद हाउ डिटेल्ड और अंडरस्टैंडेबल योर सॉल्यूशन इज, जो आप छोटे छोटे सॉल्यूशन लिखते हो ना, दो तीन, बिकॉज द जीटीओ शुड गेट वेरी क्लियर आइडिया कि जो भी आपका कैंडिडेट है वो इस प्रॉब्लम को कैसे डील करने वाला है। उसके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसने बोला कि इंजर्ड मैन को लेके जाएगा, तो इफ आई हैव रिटन टू पीपल विल टेक इंजर्ड मैन, गो टू दैट सिटी, एडमिट इन, कॉल फैमिली एंड कम बैक। अब मैंने ये तो लिखा ही नहीं, मैं जाऊंगा कैसे, मैं अपनी गाड़ी लूंगा, ठीक है, उठा के लेके जाऊंगा, लिफ्ट लूंगा, हाउ विल दैट, मैं लेके कैसे जाऊंगा दूसरी सिटी। द क्लैरिटी इन हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम और एड्रेस दैट प्रॉब्लम शुड बी वेरी वेरी, इट शुड बी वेरी क्लियर आपकी शीट में, ठीक है। देन आपने अगर फिजिकल लैंडमार्क्स लिखे हैं, डिटेल्ड लिखा है सॉल्यूशन, तो इट इज अ प्लस पॉइंट। एंड फाइनली, आर यू एबल टू accomplish those tasks or not, ठीक है। आप टाइम, the ultimate task is टाइम पे पहुंचना है, राइट। तो आप वो कर पाए हो कि नहीं, ठीक है। राइटिंग टाइम एंड डिस्टेंस गिव्स एन एडिशनल ब्राउनी पॉइंट्स ऊपर से, कि इसने सॉल्यूशन के बाद टाइम डिस्टेंस भी डिटेल प्लान दिया है। So that is my personal approach about writing the whole sheet. So I'll sum it up. First of all, heading GPU solution. Heading one, problem with priorities. इसने डिटेल दिया, आप लिख सकते हो, लंबा नहीं लिखना, ओनली वन स्मॉल सेंटेंस, ठीक है। इंजर्ड मैन नियर टी स्टॉल, ऐसा कुछ, ठीक है। तो प्रॉब्लम विद प्रायोरिटीज, रिसोर्सेज जो भी आपको रिक्वायर्ड है, वो आपको, वो रीडिंग ऑफ द नरेटिव 5 मिनट में यू विल नो व्हाट आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, राइट द रिसोर्सेज, देन सॉल्यूशन, ब्रैकेट में टाइम एंड डिस्टेंस लिख दो, ठीक है। वी आर अ ग्रुप ऑफ 10 people at going from this place to that place, here जो भी आपका टी स्टॉल है, लेट अस से we encountered 4 problems, we will divide ourselves into 3 groups and tackle problem 1 to 3, या फिर P1 P2 simultaneously, ठीक है। So we will divide ourselves into 3 subgroups, S1 S2 S3, then you write P1 S1 and then you write, take the 2 people will take injured man, likewise उसका टाइम आ गया, 1.5 घंटा लग गया आपको 25 किलोमीटर जाने, सबमिट करके वापस आने में, ठीक है। देन सेकंड थर्ड प्रॉब्लम, फाइनली आई राइट, जो भी ग्रुप आपका फ्री है, लेट्स से ग्रुप 2 है, तो सब ग्रुप 2 या फिर S2 will take the buffalo out of the ditch and all the groups will meet at the tea stall by, let us say, 5:50, and they will take the van and reach the hostel by 6:30. This is where my solution ends, and then you can put down a line or GTO sign करने को बोलता है, या वो आप कर सकते हैं। This is how write my GD का solution. Then comes your GD. So as I said, GD1 GD2 में you need to think, यहाँ पे सबके पास आइडिया है, ठीक है। पीपल विल शाउट, दे विल डेफिनेटली शाउट। तो एज समवन हैड आस्क्ड कि अपना आइडिया पिच इन करें या क्या, यू डोंट हैव टू पिच इन योर आइडिया बिकॉज़ द जीटीओ हैज ऑलरेडी रेड योर आइडिया, और इवन इफ नॉट, वो बाद में जाके पढ़ लेंगे जो भी आपके जीटीओ सर है। तो you don't have to tell your idea again for the second time. So listen to the group and जो भी ग्रुप का सॉल्यूशन आए, बिकॉज यहाँ पे यू नीड टू कम टू कंक्लूजन, ठीक है। तो जो भी ग्रुप का सॉल्यूशन है, यू शुड बी रेडी टू जेल along with the group. Do not stick to your own idea कि मैं ही सही बोल रहा हूँ, ठीक है। If you're being very logical and the group is going in wrong direction, तब you can stick कि यार guys मेरा आइडिया अच्छा है, gentlemen listen to, ठीक है। असर्टिव तो बनो। तब, हाँ तब, दैट्स योर कन्विंसिंग स्किल्स ना। अब आपको पता है कि कहीं जाना गलत है, बट 9 लोग बोले कि हम तो वहीं जाएंगे, बट यू नो कि 9 लोग वहां गए तो प्रॉब्लम कुएं में बढ़ गई। कूद रहे हैं। सब कुएं में हाँ, कूद then रहे you हैं तो have तुम the, थोड़ी कूद जाओगे। and not only that, you have the power and skills to convince them कि तुम भी मत कूदो, है ना। हाँ, कि बोल रहे भाई ये लो दैट, चलो ठीक है, तुम्हें जाना है तुम कूदो, मैं तो अपना देख लूंगा। हाँ, दैट शुड नॉट बी देयर। आप ग्रुप से डिवाइड नहीं हो सकते, है हाँ। ना। या तो आप ग्रुप के साथ हो या ग्रुप आपके साथ है, देयर इज नो हम्म। थर्ड पॉसिबिलिटी है। ग्रुप हम्म। स्टेज वन, ठीक है। ग्रुप डिवाइड नहीं होएगा कि किसी हम्म। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, राइट। तो व्हेन द ग्रुप इज गिविंग देयर आइडियाज, ट्राई टू गेट अलोंग विद देम, ठीक है, एंड कम अप विद अ सॉल्यूशन। अब इसमें हाउ आई ओपन इज, स्टार्टिंग में एवरीवन स्टार्ट्स लिस्टिंग प्रॉब्लम विद प्रायोरिटीज, कभी कभी तो वहां पे भी इशू आ जाता है कि किसी की हम्म। सेकंड थर्ड प्रायोरिटी बदल रही है। मोस्ट ऑफ देम द फ्रेशर्स और रिपीटर्स, समवन हैज टेकन सम गाइडेंस फ्रॉम समवेयर, तो सबको पता है कि इंजर्ड वाला तो फर्स्ट ही आएगा, नेक्स्ट हाँ। पे आती है सेकंड एंड थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। तो वहां पे व्हाट आई गिव दैट सेम लॉजिक इज, फ्रेंड्स, द सेकंड प्रॉब्लम जो मैं बोल रहा हूँ, इस टाइम पे इट विल हैपन फर्स्ट, सो वी शुड एड्रेस इट फर्स्ट, ठीक है। जो भी रैंसम होने वाला है, इससे आपके पास 3 से 6 बजे तक का टाइम है। रैंसम आपका 4:30 हो रहा है, ट्रेन आपकी 5 बजे आ रही है, तो ऑब्वियसली यू लेट द रैंसम, वो पहले होने वाला है, राइट। तो
give logical points to convince the group. And if the group is not getting convinced at all, speak out your idea loud. GTO will listen to you. ठीक है? Because भाई अब आप नहीं मान रहे हो तो this is like you have to show ना कि you are at least right. ठीक है? हाँ और 9 लोग तो नहीं मान रहे हैं. But हाँ you give some logical point. The GTO would know कि this candidate is at least speaking the right thing. ठीक या है? तो वही, सामने वाला अगर नहीं सुन रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। ठीक है, अगर आपने सही पॉइंट हाँ, दिया है वो उनका नुकसान है अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं तो। राइट. और अगर सामने वाला नहीं सुन रहा है इसका मतलब ये भी नहीं कि जीटीओ नहीं सुन रहे. जीटीओ सर इज डेफिनेटली लिसनिंग टू यू. दैट इज व्हाट ही इज हियर फॉर. हम्म। राइट. तो सर इज लिसनिंग टू यू. एंड देन यू गिव आउट योर आइडियाज. प्रॉब्लम विद प्रायोरिटी स्टेट हो गई. ठीक है. देन रिसोर्सेज होंगे. रिसोर्सेज में यू स्टे वेरी ओपन. कोई और किसी और तरीके से आइडिया लगा रहा है, बी ओपन, एक्सेप्ट इट. अपना आइडिया पिचिन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. बी अ बिट एडमेंट व्हेन यू आर डिवाइडिंग द ग्रुप्स. ठीक है. how the group is commuting from your origin point to wherever the problem is. उस mode of transportation को भी you should be very adamant कि it should be, the group should decide कि what is the right thing to do. ठीक है. Sometimes आप बस अपनी वैन की जगह जो हाफ आर्ली बस होती है वो ले लेते हो. अब बस आपको हम्म। थोड़ी ना हर जगह घुमाती फिरेगी. वो तो आपका हम्म। पर्सनल व्हीकल ही आपको घुमा सकता है. राइट. So when you are deciding your subgroups and when you are deciding the mode of transportation for that, उस टाइम पे you should be very clear कि भाई लड़ लो भिड़ लो कुछ कर लो in a civilized way. बट हम्म। ग्रुप सही चीज ही डिसाइड करना चाहिए. ठीक है. हम्म। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन कहीं से कहीं जाता जा रहा है. ठीक है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका असेसमेंट तो इंडिविजुअल ही हो रहा है ना. इफ यू हैव रिटन अ राइट सॉल्यूशन बट ग्रुप सॉल्यूशन गलत है, इट विल ऑब्वियसली शो कि आप ग्रुप को कन्विंस नहीं कर पाए. तभी ग्रुप सॉल्यूशन कुछ ये नहीं. भी एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, that you could do not convince the ग्रुप group. को एक सही राह So, पे नहीं लेके जा पा रहे हो। हाँ है ना. तो so when the GD starts, आप अपना problems with priorities, make sure the group get it straight. ठीक है. As I said, time based एक ना एक होती ही है. ठीक है. When the group the whole big group is getting divided into subgroups, make sure you given points so that the division of the subgroups is done correctly. ठीक है. Once it is done, उनका mode of transportation, choose it very wisely. ठीक है. Because there would be people who will have a better plan than yours. ठीक है. तो अग्री करो उनके साथ. जीपी में लड़ने की कोई जरूरत नहीं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं, मेरा आइडिया मान ले ग्रुप. इज नो नीड ऑफ इट. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप टास्क. ठीक है. हम्म। यहाँ मतलब इट इज लाइक काम ही आपको इतना ज्यादा है कि आप यहाँ पे हीरो नहीं बन सकते कि आई एम द पर्सन हु डिड. ठीक है. there's a lot of things to do and geographically they are very distant. जो हम्म। आपके पॉइंट्स है जहाँ पे आपकी हो. तो if you हम्म। imagine the same thing in real life, you cannot be like मैंने अकेले ये सब किया है ना. हम्म। जब आपने अकेले नहीं, आपने अकेले कर ही नहीं सकते, then why are you seeking that credit कि सब लोग मेरी बात सुन लें, मेरी बात मान जाए. be very open to changes. ठीक है. हम्म। then when that is done, your subgroup is divided, your mode of transportation is done. Resources पे sometimes people are like कि नहीं कुछ और resources होगा. तो मेरा मानना ये है जीपी में, if your solution is very good, ठीक है, then you can obviously pitch in कि friends let us do this thing. ठीक है. because obviously there are more than one solutions to GP. ठीक है. तो there gets to be two people जो लोग लड़ रहे हैं, दोनों का solution सही है. बट अगर हम्म। आपका solution अच्छा नहीं, you will tend to agree with other people. It's not wrong to agree with people, but you should also have a good solution in your mind ना. तो that is what should be done. I remember मेरे first SSB में तो I was just number 12 शायद है ना. और the other person 18 था या क्या था. हम लोग ऐसे सेमेस्टर के में बैठे हुए थे. मैं एक कोने में, वो दूसरे कोने में. और हमारी ऑलमोस्ट लड़ाई ही हो गई थी कि जो इंजर्ड मैन है उसको पास के विलेज में लेके जाया जाए या दूसरी सिटी में लेके जाया जाए. हम्म। एंड ही वाज सेइंग कि बोर्ड में रखते हैं. एंड आई सेड वहां पे बड़ा हॉस्पिटल मिल जाएगा. नहीं, वाज रिटन ही वाज इंजर्ड प्रोफ्यूजली. खून हम्म। वून बह रहा है उसका. ठीक है. तो कितना फर्स्ट एड दे लोगे, यू आर नॉट अ डॉक्टर. ठीक है. उस टाइम तुम शायद फुटबॉल प्लेयर्स या कुछ थे. ठीक है. दैट इज नॉट योर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज. तो
देन आई सेड कि भाई उस उसको बाहर भेज देते हैं, दैट हॉस्पिटल इज बेड। बहुत देर डिस्कशन हुआ, मतलब मान के चलो इसी बात पे कि उसको कहाँ विलेज पे रखना है कि सिटी ले जाना 60-70% ऑफ द टाइम ही एंड आई वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस ओनली, कहाँ है। लेके जाए। तुम दोनों का ही चल रहा फाइनली था क्या जीडी? हाँ हाँ, सब लोग चुप हो गए थे। ही वाज अ प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट, और हाँ। मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। तो सेम एज के थे, उसका 10+2 का रिकमेंडेशन था। तो भाई जो डिस्कशन हुआ हमारा, ग्रुप शांत पूरा, हम दोनों लड़े जा रहे हैं कि क्या हुए। बट अगेन सी, इफ योर सॉल्यूशन इज राइट एंड यू नो दैट, एंड इफ हम्म। यू आर एडवोकेटिंग इट, इट इज राइट। डू नॉट मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ कि भाई आइडिया गलत है फिर भी लड़े जा रहे हैं। हम्म। ठीक है, वो नहीं करना। तो मेक श्योर, व्हाट आई सेड कि व्हेन द जीटीओ इज narrating and when you're writing reading the narrative, make sure you end up with a very good plan. You write it very well. ठीक है, it adds up to your confidence कि भाई चलो अभी तक the task is going very well. ठीक है, after then this thing will happen कि इंजर्ड मैन को कहाँ लिया जाए, रिसोर्सेज कैसे यूज किया जाए, बहुत लड़ाई होगी। और मोस्टली व्हाट हैपेंस, दो अलग अलग प्लान्स बनने लग जाते हैं group में। ठीक है, so the whole group is not discussing one plan. Someone is saying something, someone is saying something। और जैसे अपना पीपीटी टीम होता है ना, हम्म। वैसे ही जो है अ, अपना यहाँ पे भी दो ग्रुप्स हल्के से डिवाइड हो जाते हैं अनसेड। कोई कुछ प्लान डिस्कस करे, कोई कुछ कर रहा है। देन दिस थिंग कम्स कि ग्रुप को जो है कंसेंसस पे आना है, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द टास्क। तो वहां पे इशू आता है, फिर लोगों को कन्विंस करो, इस दैट पता नहीं क्या क्या। तो इसमें इसमें द टिप वुड बी, बिकॉज आई डू नॉट नो कि आपका जीपीए क्या आने वाला है एसएसबी में ना। तो इट इज मोर लाइक द कंडक्ट। सो मेक श्योर यू आर very good with your conduct, you are sitting right confidently, and very kind and politely you are speaking. Do not shout, do not lean very forward, ऐसे हाथ वाथ नहीं चलाने। Then point out to the board, that is very much fine, but do not get very aggressive, because GP gets aggressive. I have heard from a lot of people and I have personally experienced. I'll tell you, I have, I can say I have an okayish command on English, but जब मैं अपना अभी ये वाली एसएसबी में ग्रुप सॉल्यूशन में दे रहा था ना, when I was nominated by the group, तो हम्म। जो मैंने छठी क्लास के बच्चे जैसे इंग्लिश बोली है वहां पे, I can tell you। क्यों? अरे भाई लोग इतना चिल्ला रहे थे, माय थ्रोट वाज डेड, गला खराब हो गया था मेरा बोल बोल के, पानी मेरे पिया गया। ठीक है, सच में, मतलब इवन माय फ्रेंड्स, देयर वाज सम पर्सन जो भाई को जान, दो लोग थे जो भाई को जानते थे। ठीक है, हाँ हाँ। उनसे अच्छी दोस्ती थी। तो ही वाज सेइंग कि अभी ही इज इन ओटी है। तो ही वाज हरीश सेइंग कि हरीश। नहीं नहीं, वो भी, और आयुष देज अनदर पर्सन। अच्छा अच्छा। तो वो कह रहा था कि भाई तुझे क्या हो गया, कैसे बात कर रहा था, मेरे को मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलूं। आई कुड नॉट स्पीक, इतना इतना ज्यादा लाउड डिस्कशन हुआ था हमारे जीडी में। एंड इट पीपल आर वेरी सिविलाइज्ड, ऐसा नहीं कि कोई बहुत लड़ रहा था। ठीक है, बट एज आई सेड देयर वर टू प्लान्स साइमल्टेनियसली बीइंग डिस्कस्ड। ये देख के आना तो आपको एक ही सॉल्यूशन पे है, क्या 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 किया जाए ना। तो वो दो सॉल्यूशंस को एक बनाने में पड़ रसाकशी हुई। हम्म। ठीक है, तो द होल इन आई ओवरव्यू के हिसाब से द अप्रोच शुड बी, मेक श्योर यू हैव अ गुड प्लान ऑफ योरसेल्फ, ताकि अगर ग्रुप किसी कंसेंसस पे ना आ पाए, कंसेंसस ना अगर आए ग्रुप का, तो आप फाइनली आपके पास एक रिजॉर्ट हो कि आप अपना आइडिया पिच कर दो कि फ्रेंड्स ये करते हैं, बिकॉज यू नो दैट इट इज राइट, है हम्म। ना। तो इन इनिशियल फेज ऑफ योर डिस्कशन, डू नॉट पिच इन योर आइडिया कि मेरी सुनो मेरी सुनो। बट अगर कुछ ना होए ग्रुप का, तब आप बोल सकते हो कि फ्रेंड्स लेट अस गो विद दिस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द टास्क इज कि भाई ग्रुप कंसेंसस पे आना एक है, और प्लान होना कंसेंसस चाहिए ग्रुप के पास। हम्म। वो प्लान सही होना चाहिए। ठीक है, so हम्म। be open to ideas, but if these discussions do not work, pitch in your idea ताकि एटलीस्ट टास्क कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हम्म। so that's my overall approach towards GP. I make sure that I listen to the GTO very well, and then I read the narrative very well so that I retain important points, time when you're standing, resources वगैरह. Once I'm done with reading the narrative, I have a plan in my mind. ठीक है, and हम्म। in the 10 minutes I just write it down very well. थोड़ा सा one additional thing which I do during writing is the calculation of distance time. वो बोर्ड पे लिख के वो तो वहीं करना ब्रैकेट्स पड़ता में, है। हाँ। That I हाँ, that I do during those 10 minutes. ठीक है, हम्म। so I'm done. Once I'm done with that, people start with the GD.
they shout to make sure the group gets the priorities straight. Okay, you हाँ, open while the resources are being selected. Okay, but make sure that they do not waver from a good plan, वरना बाद में नया प्लान बनाना शुरू करोगे 10 मिनट के बाद. That should not be the case. एक ही चीज ठीक को है. 4 बार डिस्कस कर रहे हैं। राइट, इट शुड बी प्रोग्रेसिव कि आप एक चीज हो ही डन, अगला डन, ऐसे आपका काम खत्म होने की डायरेक्शन में आप जाने चाहिए हो. ऐसे नहीं एक ही चीज को लगे पड़े वही डिस्कशन हो जा रहा है. इट इज हम्म, नॉट फ्रूटफुल. ठीक है. तो वंस यू आर डन विद दैट, आप अपना ग्रुप डिवीजन हो गया, रिसोर्सेज हो गए. ठीक है. हाउ डू यू रिट्रीव. आप अच्छा, एक और चीज, लास्ट जो प्रायोरिटी होती है उसमें भी थोड़ा रस्साकशी होती है. सम पीपल डिवाइड फोर इनटू फोर सब ग्रुप्स. मैं पर्सनली 3 में करता हूँ, तो वहां पे कन्विंस करना पड़ता है. ठीक है. जैसे आई टेल यू, लास्ट टाइम इन माय टीजीसी वाला एसएस, द फाइनल सॉल्यूशन वाज वी हैड 4 सब ग्रुप्स. हम्म, मैंने 3 ही बनाए थे. बट आई स्टिल आई वाज ओपन. अगर ग्रुप बोल रहा है कि 4 लोग बनाते हैं, 4 लोग बनाते हैं. नो नीड टू स्टिक टू योर ओन सॉल्यूशन. आई न्यू माय सॉल्यूशन इज वेरी राइट, बट डजंट मीन आई हैव टू स्टिक टू दैट ओनली. ठीक है. सो वो चीज हुआ, देन यू आर डेफिनेटली गेट टू अ कंक्लूजन. अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं. सो देन द ग्रुप नॉमिनेट्स वन पर्सन कि कौन जीटीओ को देगा. तो इफ यू आर नॉमिनेटेड, इट इज अ गुड थिंग दैट द ग्रुप हैज डिसाइडेड कि भाई दिस पर्सन कैन वेरी वेल प्रेजेंट ourselves in front of the GTO. So it is a good thing. If you are not nominated, it is no harm, because that nomination जो आप होते हो and when you give the solution to the GTO, those are हम्म, brownie points. अगर आप nominate नहीं हो, doesn't mean कि आप recommend नहीं होगे. So do not हम्म, think much कि आप nominate नहीं हुए. हालांकि I got nominated both the times, नीली के टाइम पे भी and during this हम्म। as well. तो दोनों टाइम मैंने group solution दिया था. So that is the thing. And then GTO asks, if you are not giving the solution, the GTO asks if someone wants to add something to the solution. ठीक है. So if the person has missed something very genuine, then you can politely say it. Do not make it look like कि आप उस बंदे की कमी निकाल रहे हो कि सर देखो ये नहीं हो उसको पाया. उसको नीचा गिराने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उसको नीचा गिरा दो। ये भी हाँ, गलत चीज है। आप पोलाइटली बता दो कि सर दिस कैन बी एडेड. डू नॉट से दैट सर ही हैज मिस्ड दिस. you can say sir this was also discussed, yeah, this can also be added. ठीक है. Then sometimes what happens is the person who has been nominated वो अपना solution बोल देता है instead of the group solution. ऐसे में do not say anything, हम्म, do not fight. ठीक है. अब ऐसे point out मत करो कि सर इसकी इसने जो solution दिया वो तो हुआ ही नहीं था डिस्कस. ठीक है. हम्म, वो जीटी ऑलरेडी नोस की इसने कुछ और बोला है. तो आपके एक्स्ट्रा बोलने से कुछ नहीं होगा. ही विल टेक हिज एक्शन जो उसको लेना है जीटीओ सर. हम्म। ठीक है. Then there is one case when do not the group does not comes to a conclusion and the time runs out. Then if you are being you got nominated, what you can do is you can say, you can start with problems priorities S1 S2 and then say sir in the given time we as a group could only come to a conclusion this far. इस इतना ही हमसे हुआ. डू नॉट मेक अप होल स्टोरी बची हुई. अपना प्लान मत बता दो ग्रुप के हाँ नाम हाँ. पे। Because again the same approach, what is the task to give the group solution? If the group solution is incomplete, give an incomplete solution. Do not हम्म। add अपनी तरफ से anything. ठीक है. Stick to the instructions. ठीक है. तो this is my whole approach towards GP. This is लग how रहा it है is done. हम लोगों ने जीपी में कुछ ज्यादा ही डिस्कशन कर लिया है। It is an important task मेरे हिसाब हम्म, से ना. It is very वही important वही। task हम्म, because it sees a different aspects of how do you handle things, right? Are you ready to gel along with people? Are you ready to listen to others when they're not listening to you? Okay. How do you react when you are right still the group is not listening to you? They say I said I divided myself our group into 3 subgroups. The final solution was of 4 people. I knew हम्म। my solution is right, still I got along with 4. So some people may like कि हम तो 3 में ही रहते हैं, right? So that is something you should refrain from. हम्म। Chill along with the group well and just make sure that the group comes to a conclusion. If it does not and you are being nominated, then say the solution जितना भी हुआ है. तो हम लोगों ने जीपी पे बहुत अच्छा डिटेल डिस्कशन कर लिया था और तेरे अप्रोच के बारे में जान लिया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब किसी के दिमाग में कुछ शक और कुछ रह गया होगा, डाउट्स रह गए होंगे।
अगर तब भी किसी में अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पीजीटी और एचजीटी की तरफ। ठीक है, पीजीटी में एचजीटी में बहुत सारे मैथ्स हैं कि आगे रहना चाहिए, पट्टावल्ली ही हाथ लगाना चाहिए, वो जो हमारा वो होता है क्या बोलते हैं लोड होता है उसे नहीं छूना है। ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, अपने अप्रोच के बारे में बता थोड़ा सा। Right. So how PGT is conducted is your GTO first of all takes you to the PGT ground, and वहाँ पर he tells you about some rules, right? So there is one group rule which says that between PGT 1, 3 and 4, 1, 2, 3, 4. So when the group, whole of the group has uh, came out of the PGT 1, then only you can approach your second PGT. So what generally people do is that they first climb fast out of PGT1 and then they start looking at the other next PGT. तो वो सब अपन को नहीं करना है. Stick to the group. Then there's this color rule. It says that the white is inbound for the candidates, the helping material, and the load. So you can put the load and let the helping material touch the white, and you can also stand on it. So for color blue, you can stand on it, but your helping material and your load cannot touch it. And for red, neither you nor your helping material and the load, all three of them cannot touch red at all. So this is your group, your color rule. Then the GT also tells you that you cannot tie the bully and your plank to make it a long 11 foot coverage. फिर तो सब कुछ ही पार हो जाएगा. फिर कुछ ऑब्स्टिकल्स का कोई मतलब ही नहीं है। वो जो हाँ, फिनिश लाइन और स्टार्ट लाइन से शुरू करो ब्रिज बनाना और सीधा निकल जाओ right. पार करते हुए। You can also not do that. And then he says says कि ऐसे कि नहीं एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल पे जंप करके चले गए. So you cannot jump between the obstacles. You have to bridge it, right? And the last one is that your start line and finish line are extended towards infinity. तो ऐसा भी नहीं कोई स्मार्ट चला के साइड से निकल गया, right? तो वो भी आप नहीं कर सकते. So these are some basic rules of PGT. Then उसके बाद the PGT starts. So PGT में there are few things. The candidates, the helping material. There are three helping materials: the plank, your pulley, and rope. इसमें भी what I feel is some people take coachings and then use the same terms. So अगर जो GTO है, he has said रस्सी फट्टा बल्ली, right? So address it as रस्सी फट्टा बल्ली. If he has said plank, बल्ली and rope, do not say फट्टा बल्ली and rope. ठीक है? So even remember the terms he has used. जीटीओ। So if हाँ, तो if GTO has said कि it is a plank, you cannot call it फट्टा. That is what I'm saying. This is something which I personally take care of. And then after that, you as you asked कि कौन सा हेल्पिंग मटेरियल उठाना चाहिए, is a myth, right? उसमें I feel that there is no need कि आप प्लैंक ही उठाओ, आप बल्ली ही उठाओ, रोप ही उठाओ. तो I'm personally a bit light, तो मैं तो रोप उठा लेता हूँ. ठीक है? तो first SSB में I could not lift anything. So what happened was in my first SSB we were lined up and I was just number 24. तो 12 मैंने प्लस हुआ था. That was 20 something else. So हम मैं चेस नंबर 24 था. एंड व्हाट हैपेंड वाज जीटीओ सेड की लाइन से खड़े हो जाओ. तो 18 से 24 शायद वाज आवर ग्रुप. ठीक है? तो अब हम लोग लाइन से खड़े हो गए. देन मैं एंड में, मैं 24 वाज द लास्ट पर्सन हु गॉट स्क्रीन्ड इन. तो जीटीओ सेड कि पिक अप व्हाटएवर मटेरियल इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्टार्ट. एंड इट हैपेंड टू बी मेरे सामने लोड था, तो मुझे लोड ही उठाना पड़ा. वरना भाई तो मेरे को बोल के भेजे थे कि रोप हो सके तो उठा लेना या फिर स्टे फ्री हैंडेड. ठीक है? लोड मत उठा लेना भाई। जीटीओ सर ने इंस्ट्रक्शन दी कि जो सामने उठाओ, हमें उठाना पड़ेगा, सीनियर है उन्होंने बोला है, राइट? तो वो फिर उठाना पड़ा लोड मेरे को. बट देन पीजीटी वन में मैंने किसी और को दे दिया कि भाई लोड उठा ले. बोला भाई ये उठा ले तू, मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ, राइट. तो लोड तो आप मत ही उठाओ मेरे हिसाब से. तो देन इट रेस्ट्रिक्ट्स योर मूवमेंट. आप सॉल्यूशन दे भी रहे हो तो हाथ में लोड बोल दो कि वो कर दो. आप अलग स्ट्रगल नहीं. में हो वो लोड के साथ, आइडियाज तो छोड़ो। हाँ, हाँ, राइट. सो डू नॉट टेक द लोड. इवन इन पीजीटीबी आई प्रेफर रोप, बिकॉज रोप अगर आपके पास है तो मोबिलिटी थोड़ी ज्यादा है आपकी. ठीक है? अब जल्दी आराम से चल सकते हो.
प्लैंक इतना भारी सा है, स्पेशली इन एएफएसबी द प्लैंक इज वेरी हैवी हेवी। हैवी होता है। So you cannot hold a heavy plank and walk or look for ideas. आपको भी खुद inconvenience होगा. So personally I prefer that I take up the rope. ठीक है, अगर रोप नहीं तो बल्ली and lastly the plank, because it will hinder your movement maximum. ठीक है, और लोड तो लेना ही नहीं है. That is हम्म, one thing. And maybe I tried tend to stay in front of the group, in front three people. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि यू गेट टू सी द स्ट्रक्चर एंड यू कैन गिव आइडियाज इजीली, राइट? अब आप लेट से पीछे खड़े हो बिल्कुल, ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस इससे पीजीटी 3 4 आता है, उसमें बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें आपको प्लैंक फंस के आप कर पाते हो. अगर आप दूर खड़े हो तो आप स्ट्रक्चर को ढंग से नहीं देख सकते. एक हम्म, राइट साइड का व्यू तो आप देख ही नहीं सकते, है ना? यू आर गेटिंग ओनली वन व्यू. तो इट इज बेटर टू स्टे इन फ्रंट सो दैट यू कैन लुक एट द satisfying way, जैसे जितना आपको देखना है, you can come up with a solution. So starting off with PGT1, PGT1 में तो there's some simple planking, plank रख दो, उस पे सेल्फी लेके ब्रिजिंग। जाओ. उसमें हाँ, उसमें personally I tend to stay forward. जितना जल्दी I cross and go to the finishing line, I tend to stay आगे. ठीक है, then PGT2 से थोड़ा सा ideas लगने शुरू होते हैं. ठीक है, PGT2 में I tend to give ideas. ठीक है, उसमें पीजीटी टू में जनरली देयर आर टू ऑब्स्टेकल्स, है ना? उनमें से एक का आइडिया दे दो, बहुत है. ठीक है, पीजीटी 3 में इट शुड बी यू. ठीक है, एक जो इम्पास होता है ना, जहाँ से 3 जगह सॉल्यूशंस आते हैं, वो हाँ भी हाँ। आपको ही करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूरज यहाँ से उग जाए, चांद उगे ही ना, डजंट मैटर, वो आप ही को करना है. PGT3। हाँ। हाँ, पीजीटी 3 में इट शुड बी यू, बिकॉज see the thing is it is one of the difficult most difficult structures हम्म। पूरे पीजीटी में. if you can give solution तो that is YouTube will look okay, चलो ये है वो कैंडिडेट जिसको आगे अच्छे से असेस करना है. असेस करना है, हाँ। हाँ, तो एंड देन पीजीटी 4 में भी you should give ideas but it is also difficult. ठीक है, now coming to how to give the ideas. So in layman terms अगर मैं समझाऊं तो आपका ऑब्वियसली पता है आपको प्लैंक रखना है. ठीक है, इमेजिन योर प्लैंक पैरेलल टू द ग्राउंड. पहले कोई जगह ढूंढो कि कहाँ रखना है आपको, एंड दैट जगह शुड बी वाइट बिकॉज ब्लू एंड रेड पे यू कैन पुट योर प्लैंक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड अ प्लेस यू कैन पुट योर प्लैंक इन द डायरेक्शन ऑफ योर मोशन. जितना आगे हो उतना अच्छा, ताकि आप क्रॉस आराम से कर सको. ठीक है, फाइंड अ प्लेस. अब अगर आपने वो एक जगह आपको मिल गई, अब आपने प्लैंक रखा तो वो शेक करेगा, राइट? तो आगे तो आपको पैर रखना है, तो फाइंड समथिंग पीछे सो दैट यू कैन लेट द प्लैंक होल्ड. अगर मैं प्लैंक ऐसे रख रखा है, से कुछ है, प्लैंक विल नॉट गो अप हम्म। ना. फाइंड समथिंग यहाँ पर. तो इसमें भी देयर आर थिंग्स, समटाइम्स जहाँ आपको प्लैंक रखना है वो जगह है ही नहीं, कोई कहीं रख ही नहीं पा रहे, देन आपको देयर आर टू वेज टू मेक दैट पॉइंट जहाँ पे आपको प्लैंक रखना है. इधर इट इज हार्ड, आप बल्ली से बनाओ, ठीक है, या फिर सॉफ्ट रोप से बनाओ. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज कोई जगह ढूंढो जहाँ पे प्लैंक रखना है, या तो होगी या फिर हार्ड से बनेगा आपका ये बल्ली सॉफ्ट से, है। तो रोप. ये 3 पॉसिबिलिटीज है. वंस वो चीज बन गई, देन पीछे ढूंढो कुछ जहाँ पे आप प्लैंक को अटका सकते. ठीक है, सो दैट इट कैन रेस्ट एंड कैन बी पैरेलल टू द ग्राउंड. मोस्टली पैरेलल थोड़ा एंगल चल जाएगा. ठीक है, उसके भी दो तीन तरीके हैं. या तो कुछ होगा पहले से कोई स्ट्रक्चर, गोल पोस्ट टाइप, ठीक है, हम्म। नेल कोई होगी, या फिर दैट इज वन, इट इज प्री एग्जिस्टिंग. सेकेंड इज बल्ली लगा के आपको रोकना पड़ेगा, और रोप लगा के. अगेन सो देयर 3 पॉसिबिलिटीज. the point where you are putting a plank, उसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं. इट विल इधर एग्जिस्ट हार्ड और सॉफ्ट. सेम गोज फॉर योर वाला पार्ट जहाँ आपको प्लैंक को रोकना है, वो या हम्म। तो होगा या आप बल्ली से बनाओगे, फिर आप रोप से बनाओगे. ठीक है, तो इसमें इट साउंड्स इजी कि 2 जगह ही तो ढूंढनी है, बट व्हेन यू गो देयर तो स्ट्रक्चर्स इतने इतने होते हैं कि आपको मुश्किल हो जाता है. तो दैट कैन बी डन थ्रू प्रैक्टिस. देयर इज नो हार्म इन गोइंग टू एनी कोचिंग. मेरे हिसाब से तो जाओ, आप गाइडेंस लो, जैसे लाइक एनी अदर एग्जाम, जेई मेन हो गया आपका, डॉक्टर लोग का जो एग्जाम होता है, एम्स वगैरह का, हम्म। सबमिट, तो उसमें भी पीपल टेक कोचिंग. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग कोचिंग. जस्ट हम्म। एज आई सेड इन माय प्रीवियस डिस्कशन जो मैंने बोला था, डू नॉट कॉपी पेस्ट किसी का भी आइडिया. ठीक है, अपने आप को डेवलप करो, बिकॉज आप रिकमेंड तो हो गए, बट एकेडमी में आप खुद नहीं कर पा रहे, क्या फायदा उस चीज, है ना? तो डेवलप योरसेल्फ. ठीक है, सो दिस इज माय अप्रोच हाउ आई सॉल्व द ऑब्स्टिकल्स. ठीक है, अगेन आई से फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड अ प्लेस जहाँ पे प्लैंक रखना है.
तीन तरीके से वो बनेगा। फिर पीछे एक जगह ढूंढ लो ताकि आप प्लैंक को स्टेबल कर सको, एंड देन पुट योर फीट और आगे चले जाओ। ठीक है। अब इसमें भी कुछ चीजें होती हैं कि आपको प्लैंक वेस्ट नहीं करना। पीछे आपका प्लैंक निकल रहा है और आगे से वो छोटा पड़ डिस्टेंस गया। कम, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, हाँ जंप नहीं कर सकते हो। हाँ हाँ, तो आप उसको प्लैंक को पीछे वेस्ट मत करो। अगर आपका एफर्ट यहाँ है, प्लैंक यहाँ तक होना चाहिए, नहीं कि प्लैंक यहाँ तक नीचे जा रहा है। राइट। तो वो प्लैंक को पीछे ज्यादा मत जाने दो, वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ग्राउंड के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है कि एक फ्लैट स्लैब है, यहाँ पर ब्लू है या आधा व्हाइट है। ठीक है। तो ब्लू पे तो प्लैंक रख नहीं सकते, तो यहाँ पे बल्ली रख के उसके ऊपर प्लैंक रख दो। ठीक है। तो हम्म। देयर आर वेज जो आपको सोचने पड़ेंगे कि आप कैसे प्लैंक को क्रिएटिव बनना करोगे। पड़ेगा। हम्म। थोड़ा सा। अब आपका क्या है, एक टॉप है जो पूरा ब्लू है। ठीक है। हम्म। तो क्या करोगे, और नीचे दो हुक्स हैं, तो आपको रस्सी बांधनी पड़ेगी, उसके ऊपर प्लैंक रखना पड़ेगा। जैसे एक यू शेप में आपको रस्सी बांधनी पड़ेगी। ठीक है। हम्म। कभी कभी क्या होता है, आपका पोस्ट तो है पर पीछे दो नॉट्स हैं, कुछ अटकाने के लिए नहीं है, तो आपको उल्टा यू बनाना पड़ेगा, इन्वर्टेड। ठीक है, हम्म। ताकि आपका प्लैंक ऊपर ना जाए। देयर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो एसएसबीस में होते हैं। Central approach stays the same. Find a point where you can put your flank. If there is not, create one. ठीक है, either using a bully or rope. Then find a point where you can let your which can help your flank get stable. Either it will be there, or if it is not, then make one. Either using again the bully or rope जो भी आपके पास available. Okay, central approach stays the same. ठीक है, then you put your feet and आगे चले जाते हो। This is how I solve the PGT, and then comes how much you need to contribute. अब आगे की चीज आती है। तो मेरे हिसाब से what the assessor wants is कि पहली बात तो the candidates should stay in front। ठीक है। आइडियाज दे। ठीक है, दैट इज हाउ यू बिकम द लीडर। आप ग्रुप को आगे लेके जा रहे हो आइडियाज दे दे के। ठीक है। देन इफ यू लुक एट इट ना, आपके ऑब्स्टिकल के पास ज्यादा जगह होती नहीं है। दो या तीन लोग ही खड़े हो सकते हैं वहां पे। ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू आर इन दोस थ्री पीपल। ठीक है। उनके पीछे होगे तो यू कैन नॉट लुक एंड यू कैन नॉट गिव आइडियाज। So I tend to stay in the three people who are around the obstacle. मैं उनसे पीछे नहीं रहता कभी भी। तो always stay in front, stay in the top three people so that you can look and give the ideas firstly. Then again, if you have that practice, or you can say that intelligence, then you can come up with the ideas fast. Okay, so the GTO is looking for that. Then if you are not the person among the three who is giving the idea, help the person जिसने भी idea दिया है। Okay? क्योंकि अगेन द टास्क इज ग्रुप को आगे जाना है, आपको नहीं। ठीक है। तो कोई और भी आइडिया देता है तो हेल्प हिम। अगर उसने बोला कि जेंटलमैन वी नीड टू टाई द रोप, तो आप जल्दी से रोप बांध दो ताकि उसकी हेल्प हो सके। इज नो हार्म इन दैट। ठीक है। अब आते हैं असली चीज पे, किस किस टाइप के लोग होते हैं वहां पे, है ना। तो कुछ तो ये फनी पार्ट है। तो कुछ तो होते हैं कि नो नो जेंटलमैन दिस आइडिया वोंट वर्क। ठीक है। तो आपको पीछे पुल करेंगे। ठीक है। तो उनको पोलाइटली बोल दो कि जेंटलमैन आई थिंक दैट दिस आइडिया आइडिया विल वर्क, लेट मी इम्प्लीमेंट द आइडिया। राइट। सो सम पीपल विल से कि नो नो जेंटलमैन दैट आइडिया वोंट वर्क। तो पोलाइटली टेल देम कि जेंटलमैन आई फील दिस आइडिया विल वर्क, लेट मी इम्प्लीमेंट द आइडिया। तो पोलाइटली बोलो। ठीक है। इफ यू आर वांटिंग समवन को आपका हेल्प करे तो से जेंटलमैन प्लीज पास मी द प्लैंक। प्लीज वर्ड यूज करो। ठीक है, बी पोलाइट। किसी ने आपकी बात मान के ट्राई कर दिया, थैंक यू बोलो। बी जेनरस टुवर्ड्स पीपल। देन देयर विल बी पीपल हु विल से कि ओके जेंटलमैन द रोप इज टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, और यू टचिंग द ग्राउंड, वो बोलेंगे ऐसे थोड़ा सा आपके लोग फॉल्ट ढूंढेंगे। उनको बोलो कि ये थैंक ये यू फॉर टेलिंग, हाँ, आई विल टेक केयर चेस्ट ऑफ नंबर इट। 19, योर रोप इज टचिंग, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, हाँ प्लीज डोंट ब्रेक ये ऐसे रूल्स। हाँ, ऐसी बहुत जनता मिलेगी। उनको पोलाइटली उनको एक्नॉलेज करो एंड अपना काम करते रहो। ठीक है। जब तक जीटीओ सर ना बोले, है ना, कि डोप इज टचिंग, तब तक किसी और की मत सुनो। ठीक है ना। क्योंकि जैसे जीओआर जब होती है, जीओआर में ना जीटीओ सेज कि समवन हैज टच्ड द रेड, समवन गो एंड द ऑब्स्टेकल अगेन। तो जीटीओ सर अगर बोले देन डू इट। ठीक है। अगर वो बोलते हैं भाग के जाओ तो वापस जाओ। वैसे आई डोंट थिंक जीटीओस बोलते हैं ऐसा कि दोबारा करो उस चीज को, है ना। इट स्पेशली पीजीटी में नहीं बोलते ज्यादा। तो देयर विल बी पीपल लाइक दिस। ठीक है। एंड देयर विल बी पीपल हु आर नॉट जस्ट होल्डिंग द आर्टिलरी। ठीक है। तो अपन को वो काम भी नहीं करना। देयर आर पीपल जो लाइन के पीछे खड़े होंगे बिल्कुल। ठीक है, जिनको मतलब ही नहीं।
तो अपन को कोई वो लेना चाहिए। देना नहीं। हाँ, तो व्हाट यू शुड बी डूइंग, यू शुड बी इन टॉप थ्री पीपल, ठीक है, गिव आइडियाज, एंड इफ यू आर नॉट गिविंग आइडियाज, समवन एल्स इज गिविंग द आइडिया, हेल्प देम इम्प्लीमेंट द आइडिया। इम्प्लीमेंट इट। Sometimes what happens is you same thing happened with me in पास पे जब हम थे पीजीटी थ्री में। तो क्या हुआ कि आई कुड सी दैट साइड में आइडिया है, ठीक है, तो मैंने बोला कि वी कैन पुट द प्लैंक इन, देयर इज अ स्मॉल नेल, वी कैन पुट द प्लैंक टू द नेल एंड वी कैन मूव। ग्रुप सुनने को नहीं तैयार, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ नहीं सुन रहे, ले देखिए बात करा उन्होंने, एक किसी और ने सेम आइडिया दिया तब सुने। तो यहाँ पे देयर आर टू थिंग्स, if you are giving idea and group is not listening, it gives an impression that you do not have convincing skills, ठीक है, बट कभी it is evident that you are giving the right idea, ग्रुप नहीं सुन रहा। तो हाँ। जब ग्रुप ना सुने है ना, और आप एक्चुअली में बहुत बार बोल चुके हो, स्पीक योर आइडिया लाउड, बिकॉज इफ नो वन इज लिसनिंग, GTO is definitely listening. So the GTO should get an impression कि okay, this candidate knows the solution, the group is not listening, ठीक है, तो आप अपना आइडिया जोर से, इतने जोर से बोल दो कि GTO को अच्छे से समझ आ जाए, डिटेल में अपना आंसर बता दो। दैट इज व्हाट आई डिड, बिकॉज व्हेन आई केम बैक टू डॉर्मेट्री आफ्टर अपना GTO का डे वन, आई फेल्ट कि मेरा GTO उतना अच्छा नहीं गया, ठीक है, हम्म। बस द ग्रुप वाज नॉट लिसनिंग। एवरीवन वाज सेइंग कि अपना GTO ग्रुप ने खराब कर दिया, तो मेरे को उतना उम्मीद नहीं था कि मेरे को उतना अच्छा जाएगा मेरा GTO, बट देन थिंग्स वेंट सेटिस्फेक्शन वेरी नहीं आ वेल। रहा था वो देख के कि कोई सुन ही नहीं रहा है। नहीं आया, बिकॉज वी वर फॉर अ गुड 5-10 मिनट्स वहां पर, कम से कम 10 से 12 मिनट तो हमने लगाए होंगे, 15-16 भी हो सकता है उस इम्पास पे, ठीक है, और पीपल नॉट लिसनिंग, ठीक है, फाइनली कोई, अरे एक और क्या हुआ, पीजीटी फोर में, तो ऐसे दो पोल्स थे सामने की तरफ, डिवाइड, तो मैंने बोला एक्सटेंशन उससे से निकले रहते हैं, हाँ। बल्ली रखो, ठीक है, उस पे प्लैंक रखो, पीछे से उल्टा यू बांध देंगे हम लोग, ठीक है, और व्हाट आई डिड वाज आई आस्क्ड समवन फॉर द बल्ली, ठीक है, और मैंने बल्ली रखी, कोई कैंडिडेट आया उसने बल्ली हटा के अपना आइडिया लगाने लगे हो, एंड तो बहुत कुछ होता है स्पेशली कि भाई रिपीट। पहले मेरा तो कर लेने दे पूरा। हाँ, और इट वाज अ सिंपल टेकन इजी सा सॉल्यूशन था उसका, बल्ली रखो, उल्टा यू बांधो, प्लैंक रख दो बीच में, ठीक है, बन गया ही ब्रिज, हाँ। आई रिमेम्बर ही लिफ्टेड द बल्ली एंड पुट इट इज प्लैंक, आई वाज लाइक क्या हो रहा है भाई, ठीक है, तो कोई होते बात हैं नहीं, ऐसे। हम्म। होने दो, ठीक है, तो that thing and that thing also happens. So PGT में your conduct also matters, because the group sometimes gets too much, and you need to maintain your composure, ठीक है, एंड भाई तो एक चीज बोलते हैं, सॉल्यूशन दे दो, ग्रुप से हैंडल करना पड़ेगा ग्रुप को, ठीक है, अगर हम्म। आपको 40 मिनट का टास्क है और आप 40 मिनट में खत्म करोगे तो ग्रुप को झेलना पड़ेगा, भाई से 15 मिनट में खत्म कर दो, ग्रुप को नहीं झेलना पड़ेगा, बच जाओगे। तो जल्दी जल्दी निपटाओ, वरना जल्दी जल्दी आगे जाके निपटाओ। डिसएग्रीमेंट्स बढ़ेंगे, कंफ्यूजन बढ़ेगा। हाँ, जितना टाइम लगाओगे उतना बातें होंगी, लोग क्या नाम है, डिसएग्रीमेंट्स होंगे। वन मोर थिंग दैट कैन बी दैट इज इम्पोर्टेंट इज डू नॉट ओवर परफॉर्म। जनरली लोग क्या करते हैं, पीजीटी वन से पीजीटी फोर तक सब सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, ठीक है, सो इट इज नॉट योर टास्क, इट इज अ ग्रुप टास्क, ठीक है, हम्म। सो व्हाट आई आइडियली फील द कंट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से विच आई फॉलो इज, पीजीटी टू में एक सॉल्यूशन देता हूँ मैं, ठीक है, पीजीटी थ्री आई मेक श्योर जितना मैं कर सकूँ पूरा कर दिया तो भी अच्छा, हम्म। एंट्री से इम्पास से लेके एंड तक। पीजीटी फोर में देयर आर थ्री ऑब्स्टिकल्स ना, तो तीन में से दो का मैं टारगेट रखता हूँ, अगर एक भी होता है तो चलता है, ठीक है, हम्म। सो वन इन पीजी, वन ऑब्स्टिकल इन पीजीटी टू, होल ऑफ पीजीटी थ्री, एंड 60% ऑफ योर पीजीटी फोर, दिस आई मेक श्योर आई सॉल्व। पीजीटी फोर में कुछ कम हो गया, एक दिया तो चल जाएगा, बट पीजीटी थ्री तो पूरा अपन को करना है जितना हो सके, ठीक है, हम्म। देयर माइट बी समवन हु गिव्स आइडिया बिफोर यू, है ना, हम्म। यू शुड नॉट स्लैक, किसी और को रास्ता मत दो, तभी दो जब आपको नहीं आता, ठीक हम्म। है, डू नॉट बिकम हम्बल कि मुझे आता है बट कोई नहीं, तुम कर लो। तू कर ले भाई। Not saying कि do not gel along with group, I'm saying do not miss any opportunities. If you do not know the answer, then we be very helpful. किसी और को आता है तो मेक श्योर sure उसका आइडिया अच्छे से लगे, रोप बांधनी है तो अच्छे से बंधे रोप, जैसा भी उसको चाहिए, ठीक है, बट डू नॉट डू दिस, ठीक है, तो दिस इज माई होल अप्रोच फॉर पीजीटी, ये मेरा स्मॉल सा वो रहता है, अपना पर्सनल गोल, इतना तो मैं परफॉर्म करूंगी, एंड आई
जैसे लोगों को टैकल करना होता है उस टाइम आई से प्लीज व्हेन समवन इफ आई एम आस्किंग समवन फॉर हेल्पिंग मटेरियल एंड आई थैंक, अगर कोई मेरे लिए रोप बांध दे या बल्ली रख दे, ठीक है। एंड इफ समवन इज क्रिएटिंग हिंड्रेस, डू नॉट एड्रेस देम, तो वो बहुत ज्यादा करे, और जस्ट टेल देम ओके जेंटलमैन, काम आई डाउन। विल कीप दैट इन माइंड। है ना, पहली बात तो सुनो ही मत, वो ऐसे रिएक्ट इग्नोर। करो कि आपने सुना ही नहीं उसकी बात, ठीक है, हाँ। क्योंकि इसलिए कि डिस्ट्रैक्शन ना, आप यहाँ पर अपना रोप बांध रहे हो, वहां से कोई बोल रहा है रोप इज टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। जीटीओ सर ने तो बोला नहीं, आप बोल रहे हो, कोई और बोल रहा है। जीटीओ को और बता दे कि सर ये अच्छे से कर नहीं पा रहा है, मेरे को आई लेके एम आओ। नॉट आई एम नॉट सेइंग कि जीटीओ को नहीं पता चलना चाहिए, आई एम सेइंग कि अगर वो आपको अलाउ करें कि कोई बात नहीं, तो ये कैंडिडेट क्यों बोल रहा है? तुम्हारा टीममेट तुम्हारी बजाने में क्यों लगा है? हाँ राइट ना, तो डू नॉट एड्रेस हिम, और वो ज्यादा ही आपको बिल्कुल पॉइंट आउट करके बोले कि चेस्ट नंबर लेके बोले, देन ओके, जस्ट बी हम्बल, थैंक यू फॉर टेलिंग, आई विल कीप दैट इन माइंड, ठीक है। ओके। तो ऐसे पोलाइटली उसको हैंडल करो। ठीक है, तो पीजीटी और एचजीटी भी सिमिलर ही है ना अप्रोच? कुछ चेंज तो नहीं है? एचसीटी अप्रोच रिमेन्स द सेम, व्हाट हैपेंस इज ग्रुप डिवाइड्स। तो अगर हम्म। 8 का है तो 4 का चार होगा, हो 10 जाएंगे। का है तो 5। हम्म। लाइकवाइज, अच्छा जीटीओ आज समटाइम्स की किस मैनर में इसको ग्रुप को डिवाइड किया जाए, डू नॉट गिव एनी आइडियाज, वट आइडियाज। एवर द जीटीओ वांट्स वो उनको वैसे ही करना है, ही विल नॉट हम्म। लिसन टू यू, डू नॉट हाँ। गिव कि सर ऑड इवन कर लो, 5 इधर 5 उधर कर लो, समवन वाज फिश कट। सेइंग, एक भाई बता रहे थे कि सर जिनकी मुस्टैच है उनको एक में कर दो, जिनकी नहीं उनको अलग में कर दो, stuff like this. Do not do that. So HGT remains the same. Both the groups gets the same obstacle course when one group is looking at it. The other group is sitting somewhere else and they're not looking how the other group is performing. दोनों को मिलता है एक ही टास्क है। तो उस टाइम पे when you are doing your FGT HGT, there will be half of the people. Do not be over dominant. That is I would say. अच्छे से परफॉर्म करो। अब लेट्स से अगर 3 ऑब्स्टेकल है उसमें, ठीक है, तो दो का सॉल्यूशन दे दो, एक का सॉल्यूशन दे दो, डजेंट रियली मैटर मच, ठीक है। अगर आपका पीजीटी अच्छा गया है तो गिव अ नॉर्मल कंट्रीब्यूशन, जितना हो पाए वो करो, नॉट ओवर डू इट कि भाई 3 है और ग्रुप में उतने अच्छे लोग नहीं है, या तो तीनों आपने कर दिए, या फिर ग्रुप हम्म। में कोई कॉम्पिटिटिव बंदा है तो नहीं मैं ही करूंगा, नो नीड, ठीक है। तो हाउ माई एचजीटी इवेंट अभी वाले में, तो एक का आइडिया एंट्री का मैंने दिया था, द सेकंड वन देयर वाज सम जस्ट नंबर 12 ने दिया, हम्म। आधा आधा मैंने दे दिया। उसने बताया कि बल्कि हम यहाँ रख सकते हैं, मैंने बोला फिर हम रोप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, एंड तीसरा वाला जो था वो उसने दिया, तो इट वाज 50-50। हम्म। इट इज परफेक्टली फाइन, बट डू नॉट बी ओवर डोमिनेट कि नहीं तीनों मेरे को करना, दैट मतलब इज सब आता परफेक्टली है फाइन। मुझे, मैं ही करूंगा सब कुछ। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हाँ वो नहीं होना चाहिए। बाकी जीओआर इज ऑल्सो वन थिंग, एएफएसबी इसमें कभी शायद नहीं होती, अब होती है, आई डू नॉट नो, ठीक है। तो जीओआर होती है यहाँ जीओआर पे। हम्म। है ना, हाँ। तो जीओआर में फर्स्ट इज द सिंपल रैंप, ठीक है। हम्म। तो वो आप कर सकते हो, फिगर ऑफ एट, यू जस्ट हैव टू बी एजाइल, ठीक है, मेक श्योर हम्म। टू डू नॉट टच द रेड वंस, ठीक है। देन देयर इज सिंगल वॉल एंड देयर इज स्पाइडर, पैसेज बिटवीन स्पाइडर वेब। हम्म। spider's web is also there, and then there are pegs you have to climb and then slide down हम्म। after it. हम्म। So it is like individual obstacle, एक basic obstacle course होता है। The हम्म। difference is there is a tent or a snake जो उसको बोलते हैं। So the rules is that you have 3 people at least should be holding the snake, ठीक है। हम्म। And while the snake is on the obstacle, no one can approach the next obstacle, हम्म। right? So I feel what is important in GOR is that is the candidate able to follow the rules while he is physically doing something, हम्म। right? Is he keeping the group intact or not? हम्म। Because there is this क्या नारा कुछ लगाना होता है ना, भारत माता की हाँ जय, हाँ हाँ। तो भारत माता की जय हो गया, तेरा हाँ वंदे मातरम, तेरा हाँ, अलॉट, बहुत सारे होते तो हैं। हाँ, तो उसमें कोई भी जो आपका ग्रुप बोले, तो मैं इस टाइम भारत माता की जय था, उससे पहले भी कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर, तो इसमें हम्म। देयर इज नो नथिंग लाइक वेरी सिग्निफिकेंट कि क्या आपका नारा है, ठीक है। तो हम्म। मेक श्योर यू इट इज आल्सो अ टास्क कि आपको अपना वो बोलते ही रहना है नारा, ठीक है। तो डू नॉट मिस इट, ये नहीं हम्म। बोल रहे ग्रुप शांत कर बस काम किए जा रहा है। जीओआर आई फील इज both group dynamics and are you following the instructions or not, because when so much is happening, ठीक है, आप स्नेक को 3 लोग टच करें, आर यू मेकिंग श्योर ऑफ दैट और नॉट, ठीक है। और वेयर आर यू स्टैंडिंग, तो पर्सनली आई
either I am the first or the second in the line. ठीक है, ओके। because मैं agile सा हूँ and that single wall and ना it is easy for me, so I suggest the group कि let me stay in front so I can easily do that thing. ठीक है, and there is no hard and fast rule. Figure of 8 में 2-3 लोगों की बात करता हूँ, जो pegs वाला होता है वो मैंने लास्ट में किया था। ठीक है, तो pegs से चढ़ के स्लाइड करना होता है वो मैंने लास्ट में किया था, 9 लोग मुझसे पहले जा चुके थे। There is no hard and fast rule कि आपको कहाँ रहना है. However, it is good that some strong person is in center and in the back, agile people are in the front. ये मैं generally I make sure, पहले भी I had made sure in my previous SSB और इस बार भी. ठीक है, हम्म। so what the SSR is looking for is he sticking to the rules or not. Okay, red तो नहीं touch हो रहा. How physically agile the candidate is he taking care of the snake or not. जो आपका नारा है वो बोला जा रहा है कि नहीं. ठीक है, आर यू हेल्पफुल और नॉट. ऐसा नहीं कि सिंगल वॉल पे चढ़ के वहां कूद गए और खड़े हुए ग्रुप से हम्म। बोल दिया तो चुप रहते. So what I do is I climb on the wall and I help people get on the other side. Okay, or you can say if there's someone, I might not be saying this, if there's someone who is a bit healthy, so you can help him climb above. Okay, so you can help. So up group dynamics आपके check होते हैं कि how helpful you are, how much you make yourself part of the group. ऐसे नहीं कि आप physically agile हो तो आप जल्दी करके खड़े हो गए group को करने दो. That should not be the case. दिस इज अ लिटिल ओवरव्यू ऑफ GOR. उसमें यही चेक होता है. एजिलिटी जो आपका होता है वो तो मेनली इट इज फॉर द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल. यहाँ पे ग्रुप डायनेमिक्स और आर यू फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, आर यू एबल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, वो सब चीजें देखा जाता ठीक है। तो GOR के बाद अपना GTO 1 में लास्ट रह जाता है लेक्चरेट। तो लेक्चरेट है. से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले ये ऑलिव ग्रीन ने पूछा है कि हाउ टू गेन कंटेंट फॉर जीडी। जीडी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, टॉपिक्स जो तूने बताया कैसे करता है। और लेक्चरेट टॉपिक्स मींस कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज काफी ज्यादा टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो ब्रॉडली कौन से प्रिपेयर करें, फिर कंटेंट गैदर कर लिया तो उन्हें कैसे अच्छे से सीक्वेंस में लगाया जाए ताकि हम लोग उसको अच्छे से बोल सके वहां पे। So lecturate, my personal thing is people say that lecture is a 3 minute task. I look at it as a 6 minutes ka task because you get 3 minutes to think and then you have to speak for 3 minutes, right? So in lecture you get a card, small slip of paper, and 4 topics are there. So generally the pattern is there is some simple topic, my best friend types, and then there is one topic, ISRO, nuclear energy, something where you need to study a lot to speak. And then there are mild topics like global warming, something like that. Okay, so how you choose your topic is also important, right? But how you speak on it is also, it's basically more important. Okay, so I had remember भाई ने किसी SSB में म्यूजिक पे अपना लेक्चर दिया था, which seems like a very fairly simple topic. ठीक है, बेसिक, हाँ। उन्होंने लेक्चर, हाँ, but he said ये लेक्चर बहुत अच्छा गया and it happened to be he got a good ranking in that particular SSB. I will not name it. ठीक है, तो इट इज नॉट लाइक कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा नहीं है तो यू विल नॉट गेट रिकमेंडेड. इट इज मोर लाइक व्हाट आर यू सेइंग व्हिच मैटर्स. ठीक है, अब म्यूजिक में भाई ने म्यूजिक थेरेपी, म्यूजिक टेक्नोलॉजी, इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन प्लांट्स, ऐसी चीजें बोली थी उन्होंने. दिस आर वेरी टेक्निकल थिंग्स. ठीक है, तो ऐसी चीजें भी आप सिंपल टॉपिक्स पे बोल सकते हो. इट इज नॉट लाइक यू हैव टू गो फॉर इसरो, क्वाड और G20. You यूएनएससी, can say on it, ब्रेक्स, you can बिमस्टेक, हाँ। speak on it very well. हम्म। So that is about selection of your topic. Make sure first of all you select a topic which you are very confident that you can speak for 3 minutes. Okay. If you're confident on more than one topic, then you can choose whichever is you feel is a bit of high level, थोड़ा सा मुश्किल है और जिसके लिए पढ़ना ज्यादा पड़ेगा generally, which you can choose. So if I have global warming and ISRO, okay, and I feel I can speak on both of them, I will choose ISRO because it is more impactful, shows that you have more knowledge. Okay. So that is one thing. Once you are done selecting with the topic, divide it into obviously introduction, main body, and your ending. The main body I divided into 3 things. Okay. There are 2 approaches for that. One is introduction. Your introduction should be in such a way that even the person who does not know anything about the topic gets a small hint of it, and it should be smart enough so that the GTO sir would know, okay, this candidate is intelligent.
ठीक है। हम्म। तो इसरो अगर है अगर टॉपिक लेट से अब इसरो दिमाग में आ रहा है तो उसी को उठाते हैं। ठीक है, तो आई कैन माइल्डली से कि इट इज द एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कंट्री, दैट इज फॉर द पीपल हु डू नॉट नो। For the GTO, I can say that it was established in this year. This हम्म। was the first president. This was the current president. ये मेरा हम्म। इंट्रोडक्शन हो गया। जनरली कुछ टॉपिक्स में हिस्ट्री होती है, सिग्निफिकेंट हिस्ट्री, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यू कैन स्टार्ट विद हिस्ट्री, व्हाट इज गोइंग ऑन करेंटली, एंड देन व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच जिन टॉपिक्स की हिस्ट्री है। अब जैसे नए ही टॉपिक है G20 प्रेसिडेंसी, G20 प्रेसिडेंसी, ये एक साल भी नहीं हुआ अभी तो पूरा, हम्म। है ना। यहाँ पे व्हाट आई डू इज आई टॉक अबाउट करंट अफेयर्स। ठीक है, देन आई टॉक अबाउट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन नेशनल लेवल, देन आई टॉक अबाउट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑन इंटरनेशनल लेवल। सो बेसिकली टेक द टॉपिक फ्रॉम ग्राउंड जीरो टू इंटरनेशनल लेवल। इस तरीके से आई क्यूरेट इट। और द थर्ड अप्रोच इज यू कैन शिफ्ट। तो मेरे को अच्छे से याद है मेरे पहले लेक्चरेट में, तो द टॉपिक वाज ईवी मार्केट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट। हम्म। तो आई स्टार्टेड विद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्योंकि मेरा थोड़ा आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मुझे आइडिया था, इंटर्नशिप भी करी थी इसमें। वो मैंने बोला टू गेट टू कॉप 26-27 की जो क्लाइमेट कांग्रेस ऑफ पार्टीज होता है, वहाँ पे क्लाइमेट के बारे में वो होते हैं। हर कंट्री ने 500 मिलियन स्पेंड करने को बोला है, देन इंटरनेशनल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को बोला है। तो आई टुक इट फ्रॉम ग्राउंड टू वो। देन आई टॉक्ड अबाउट इंडियन कंपनीज। उस टाइम जब मेरे टाइम पे ओला इलेक्ट्रिक जो अपना स्कूटर है ना, हम्म। उसका हम्म। फर्स्ट बैच डिस्पैच होने वाला था। तो मैंने वो बोला। Then उसका जो प्लांट था दैट वाज 100% सोलर, सो आई इंक्लूडेड सोलर टेक्नोलॉजी। द क्रू ऑफ द प्लांट वाज वुमेन, ऑल वुमेन, 100% वुमेन, सो आई इंक्लूडेड वुमेन एम्पावरमेंट। So my topic was electrical vehicles and I ended it women empowerment. ओके। Then मतलब वेरियस finally, डायमेंशंस को भी टच किया तूने। there's no need to speak on only electrical vehicles or whatever your topic is for so long. Okay, then my हाउ इट ending इज इम्पैक्टेड इम्पैक्टिंग द सोसाइटी इज आल्सो correct. इम्पोर्टेंट। And how I end it is I give a sum up key since this is how it happened, this is the current scenario, and if कोई suggestion देना है आपको दो, if India and USA or other countries get along and continuously work on this, I feel that the solar technology and electrical vehicle technology, if used together, can lead us to a sustainable future. ओके। तो ऐसे आई एम वे टाइम टाइम पे से। ठीक है। तो मतलब हम लोगों का ये लेक्चरेट हो गया। ठीक है। तो लेक्चरेट के बाद हम लोग जीटीओ 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल सीटी और एफजीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई, हम लोगों ने जीटीओ 1 के सारे टास्क डिस्कस कर लिए हैं बहुत ही डिटेल में। अब बढ़ते हैं जीटीओ 2 की तरफ। तो जीटीओ 2 में सबसे पहले हमारा होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। तो उसमें तेरा क्या अप्रोच रहता था? ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस भी बता, कैसा रहा था तेरा इस बार का एसएसबी में? बोथ द टाइम्स मैंने आर्ट ऑब्स्टिकल ही करे बस पर्सनली। वो स्क्रीन जंप और बैलेंसिंग बीम मुझसे नहीं होता। ठीक है, सो बोथ इन बोथ द एसएसबी आई डिड 8 ऑब्स्टिकल्स आउट ऑफ 10। ठीक है, सो अप्रोच मेरा ये रहता है कि आई स्टार्ट विद द 10। ठीक है, एंड उसके नियरेस्ट जो भी होता है 9, 8, 7। ठीक है, मेरे से जो भी होगा मैं वो करूंगा। ठीक है, मेनली बर्मा ब्रिज जो जो होता है ना, वो मैं एंड में अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, बिकॉज देयर इज अ रूल ना कि इफ यू आर ऑन सम ऑब्स्टिकल एंड द विसल goes out, then you can complete the obstacle and you will get the points for it. So अब स्क्रीन जंप में तो एक जंप हो गया। ठीक है, आपका टार्जन स्विंग में यू स्विंग, लाइक बर्मा ब्रिज इज समथिंग जहां पर आपको टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो जनरली व्हाट आई तो व्हेन आई वाज डूइंग ना, आई वाज अराउंड इन द मिडल जब विसल हो गया आप लोग। ठीक है, सो आई कंप्लीटेड इट एंड आई स्टिल गॉट पॉइंट्स फॉर इट। so that is one thing which I do. Whenever I feel ना कि अब होने वाला है टाइम, ठीक है, तो बर्मा ब्रिज पे चढ़ जाओ। एटलीस्ट मैं बट वट एवर आई एम एट ऑन बस खत्म हो गया, आई जस्ट रन फॉर बर्मा ब्रिज। एक चीज, ठीक है। सो इन द कोर्स ना द ऑब्स्टिकल्स आर इन वेरी रैंडम मैनर। ठीक है, और दे आर इन एन आउटर सर्कल एंड एन इनर सर्कल। ठीक है, तो हम्म। जनरली 1, 2, 3, सॉरी 10, 9, 8, 7 में से कोई एक आउटर सर्कल में होगा। बोथ द टाइम्स आई ऑब्जर्व दैट 8 वाज इन आउटर सर्कल। सो जनरली आई ऑब्जर्व दैट एक बाहर होता है। तो इन माय दिस रीसेंट एसएसबी ऑब्स्टिकल नंबर 8 वाज वेरी फार अवे, 10, 9, 7 were very close to each other. So I make sure that I start with 10,
and complete all the higher figures near it. Then I go for the other one. So I did 10, 9, 10, 7, 9, 9. Then I went for 8. उसके बाद मैंने आसपास की 8 के बाद 2 किया और फिर then I did all of it. So this is what my approach is. I start off always with 10. ठीक है. टार्जन स्विंग में देयर इज वन थिंग दैट यहाँ पे रोप लगा हुआ है ना और आपने इस तरह से पकड़ लिया. इट शुड बी इन टेंशन. एक लाइन होना चाहिए, सैग नहीं होना चाहिए. तो व्हेन हम्म यू विल लीव द प्लेटफॉर्म ना, आप हल्का सा वो हो जाएगा, आपको छूटने के चांसेस हो जाएंगे. तो मेक श्योर इट इज वेरी टाइट. सिमिलर इन टाइगर लीप व्हेन यू आर जंपिंग ना, मेक श्योर यू होल्ड इट समवेयर अबव योर चेस्ट एंड होल्ड इट क्लोज टू योर चेस्ट सो दैट आप स्लिप होकर आपका हाथ ऊपर ना चले जाए. ठीक है. there's these two things. और सेम गोज फॉर योर डबल डिच. wherever your eye level is ना, उसे हल्का सा ऊपर एम करके पकड़ो. यू विल डेफिनेटली लैंड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड यू कैन जंप उसके बाद. So this is my approach. This is not much in physical individual obstacles. You should have good stamina. इसलिए push-ups, running वगैरह if you do frequently, then you can do it. मतलब तूने दोनों टाइम में 8 ही किए थे, है ना? तो दोनों में 8. ऐसा, यार प्रद्युमन ने, मैंने सुना है शायद इससे भी कम किए थे किसी एयरफोर्स वाले में शायद. कितने किए थे? एक बार भाई भाई 2 भी करके आए थे. हाँ, ये यही मुझे याद आ रहा था कि प्रद्युमन मुझे बता रहा था मैंने बस 2 ही ऑब्स्टेकल किए हैं, उसमें भी रिकमेंड हुआ है. ठीक है. तो इतना मैटर नहीं करता है अगर अगर आपका दिमाग ज्यादा तेज है. ठीक है, वहां पे दिमाग की ज्यादा इंपॉर्टेंस है. हाँ. बिकॉज इफ यू लुक एट इट, एकेडमी आपको ठीक ठाक कर देगी, सब बराबर कर देगी. वो फिजिकल रगड़ा में दे यू दे विल के. वर्क टू डू. हाँ. ठीक है. बट वो इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए 1 साल ही एकेडमी में, तो एक बेसिक इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड ना, आप घर से लेके जाओ. बेसिकल से आपको कुछ नहीं आता तो वहाँ पे तो तोड़ ताड़ के सीनियर उस्ताद लोग सब बराबर कर देंगे, आपको सब फिट फाट वही हो वही. जाएगा, है ना. हाँ. ठीक है. तो इट इज नथिंग लाइक कि आपको 10 में से 10 ही करना है तभी आप रिकमेंड होगे. बट इट इज एडवाइजेबल कि कम से कम 6-7 तो करो. ये नहीं ज्यादा कि से 2 ज्यादा से गया जितना तो हो पूरे सके करके अपनी आए. कैपेसिटी के हाँ. अकॉर्डिंग. हाँ. चलो और ठीक बस है तो. इफ यू कैन हम्म डू 10 on 10, तो यू कैन रिपीट. तो रिपीट अगर आप कर रहे हो तो फिर से स्टार्ट विद 10. उसमें 12 मिनट्स का एंड में करना फिर से. हाँ. चलो फिर हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो जाता है. ठीक है, फिर आता है हमारा कमांड टास्क. कमांडर बन जाते हैं जिसमें हम. तो उसमें क्या तेरा एक्सपीरियंस रहा था और अप्रोच क्या रहता है तेरा? सो कमांडर एज द नेम सजेस्ट कि आपको ऑन पर्पस सम पावर दी अथॉरिटी. अभी तक यू आर पार्ट ऑफ द ग्रुप, नाउ यू हैव सम अथॉरिटी. तो वन थिंग दैट नेम इटसेल्फ सजेस्ट इज कि पावर आती ये बंदे का कंपोजर तो खराब नहीं हो जाता. तो आई हैव पल्ला तो नहीं जाता लिसन टू अथॉरिटी देख के. हाँ हाँ हाँ. लिसन टू स्टोरीज की किसी ने बुलाया अपने सबऑर्डिनेट्स को कि आओ, और वो लोग आने में देर लगाए तो उनसे पुशअप्स करवा दी. बोले तुम दिल देर से क्यों आए, वहां दिल से पे ले भाग के लिया. आना चाहिए. हाँ. हाँ. तो कमांडर का मतलब ये नहीं कि आप सारी अथॉरिटी आ गई. समटाइम्स दिस जीटीओ इंटरफियर्स कि ओके कमांडर सबऑर्डिनेट्स को कि दिस आइडिया वोंट वर्क. द कमांडर सेज कि आई एम ए कमांडर, ही इज नॉट लिसन टू मी, डू नॉट लिसन टू द जीटीओ. यार, ही जैसे. इज देयर टू डिस्ट्रैक्ट अस. डोंट डोंट हाँ. लिसन टू हिम. हाँ. तो ये सब नहीं करना होता. तो कमांड टास्क में मेरा पर्सनल अप्रोच ये रहता है कि देखो द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू पीजीटी 3 और 4. ठीक है. जैसे भी आपको मिले तो उसका अप्रोच हाउ टू सॉल्व इट रिमेन्स द सेम. ठीक है. बस एक चीज है कि व्हेन यू आर लाइक इन यू आर इन द आउटर ना, एंड आप एंट्री करते हो अपने स्ट्रक्चर में, तो इफ इट इज अ सर्कुलर कमांड टास्क, आप जो है खुद जाके उसको ला सकते हो. ठीक है. अगर आप अंदर से बाहर हो देन यू कैन. बट जनरली ऐसा मत करो कि आपने दोनों सबऑर्डिनेट्स अंदर भेज दिए और आप बाहर खड़े. ठीक है. तो द योर लीडर शुड बी इन द सेंटर, या फिर आप पहले एंट्री करो. तो जनरली क्या होता है कि सिर्फ एक बॉम्ब को उठा के लाना होता है. ठीक है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक द स्ट्रक्चर go on the plank, lift it up and come back. ठीक है. बट अगर आपको एक या दो ऑब्स्टेकल्स हैं उसमें, then you should send one, then you go and तब आपके बंदे को लाओ. You should not be the last person. दोनों आपके जो हैं सबऑर्डिनेट वहां पर है, सबॉर्डिनेट्स आगे अब पहुंच वो. गए. हाँ. अब वो स्ट्रक्चर बना है ताकि आप आ सको. ठीक है. You वो should not थोड़ी. be the last guy. हाँ. वो अपना उनका आइडिया कमांड बता. हाँ. तो उनका कमांड टास्क नहीं है. देन सबसे इम्पोर्टेंट इज ब्रीफिंग ऑफ द कमांड टास्क. जो भी जीटी ने आपको बोला है कि इट इज अ सर्कुलर और स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन टाइप सेमी सर्कुलर, उसको अच्छे से बोलो. तो हाउ यू शुड बी सेइंग इट इज कि ओके जेंटलमैन, जीटीओ सर हैज गिवन मी द स्टार्स. दिस सर्कुलर रेड लाइन इज आवर स्टार्ट लाइन एज वेल एज आवर फिनिश लाइन, या फिर दिस
start line is start line, the finish line. We have three helping materials, plank, bully, and rope, and the group rules are same as PGT except of the group rule. Okay, so just number 15, please pick up the plank. Just number 18, please pick up the bully. Let us go. तो थोड़ा एनर्जेटिक और उस वे में यू शुड से इट, ठीक है। तो ये जो ब्रीफिंग जैसे मैंने बताया, ये चीजों को बोलना है वहां पे अच्छे से, ठीक है। ग्रुप रूल जो मैंने बताया कि ऑल द रूल्स आर सेम एज पीजीटी एक्सेप्ट ऑफ द ग्रुप रूल, ये बोलना है। कोई ग्रुप रूल यहाँ पे नहीं होता, देयर इज नो ग्रुप, है ना। ग्रुप रूल का कोई मतलब रहता नहीं यहाँ पे। दैट ब्रीफिंग शुड बी इन अ कमांडरली मैनर। अभी तो वीडियो आई कैन नॉट शाउट, राइट। तो यू शुड बी लाउड, यू शुड बी क्लियर, यू शुड हैव अ गुड वॉइस मॉड्यूलेशन, यू शुड हैव लाइक कमांडरली वॉइस, कि भाई हाँ लग रहा है कि अब इसको बोला कमांडर से बोल रहा है वैसे, है कमांड ना। अथॉरिटी कर रहा तो है। हाँ, तो वो लगना चाहिए, इट शुड बी इन अ पॉजिटिव वे। देन if you're asking your subordinate to do something, tell him please put the plank, please tie the rope, वेल, thank you, ठीक है, please pass me the bully, please लगाना is also again same thing important। तो यहाँ पे एक्चुअली एक चीज होती है कि प्रशांत, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। क्या हुआ ना, भोपाल में मेरे साथ, मैंने बोला सब चेस्ट नंबर 19 प्लीज पास ऑन द प्लैंक और बल्ली, लाइक दैट। तो वो बोलता जीटीओ मुझसे, कमांडर व्हाई आर यू सेइंग प्लीज टू हिम, ही इज योर सबऑर्डिनेट। बोला ओके सर, चेस्ट नंबर 19 प्लीज। प्लीज नहीं, फिर मैंने नॉर्मली प्लीज हटा दिया, मैंने बोला चेस्ट नंबर 19 पास द बल्ली और प्लैंक। तो इसको इन जीटीओ से थिंग या तो उसको उससे कन्वर्सेशन में मत दो कि सर मैं तो पोलाइट होने की वजह से बोल रहा था, जस्ट डू, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं सर मान लेंगे, आपका एरिया हाँ है। ठीक है। अगर ही वाज एक्सपेक्टिंग कि आप डिफेंड करो कि सर मैं तो पोलाइट होने की वजह से बोला था, बट अगर हम्म। आप उसकी बात मान जाते हो, इट इज अगेन नॉट अ वेरी बिग थिंग जिसकी वजह से आपकी रिकमेंडेशन छूट जाए, है ना। तो वो हुआ। देन योर हाउ डू यू सॉल्व इट अगेन इज ऑन यू। थोड़ा सा माइंड एक्स्ट्रा लगता है कि सबऑर्डिनेट से कैसे बात करना है, ठीक है। अगर अंडर से बाहर जाना है सर्कुलर टास्क में, ठीक है वो, देन द जीटीयू इंटरफेस कभी कभी वो बोलता है कि ओके जेंटलमैन टाइम इज रनिंग आउट, ठीक है। या फिर ही विल प्रेशर क्रिएट से करता कि है। प्रेशर क्रिएट करता है, तो उसमें शो सेंस ऑफ urgency इफ ही हैज सेड दैट द टाइम इज रनिंग आउट, मूव योर हैंड्स अ बिट, ठीक है। ऐसा नहीं ऑर्डर आ गया बट यू आर नॉट रिएक्टिंग यू टू आर व्हाट ही इज स्टिल सेइंग। स्लो, एंड लग रहा है ऐसा कि बहुत सारा टाइम है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है उसकी बोलने का। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एंड देन समटाइम्स हाउ जीटीओ सेज क्योंकि दिस साइड इज रेड दैट इज ब्लू, यू कैन नॉट टच दिस, ठीक है। दे ट्राई टू नो टेक द मोस्ट आउट ऑफ यू, ठीक है। दे विल पुट यू इन सिचुएशंस, तो उसको ऐसे नहीं लेना कि जीटीओ सर क्यों करे ऐसा, टिक इट पॉजिटिव लेना है। तो जीटीओ इज इंटरेस्टेड इन यू, दैट इज व्हाई ही इज आस्किंग, वरना वो तो 2 मिनट आपको भेज सकता है वापस, ठीक है। ही हैज ऑल द अथॉरिटी। So if the GTO is interfering and he's saying कि okay this is red that is blue, you take it positively, okay he's eager to know me, he's eager to select me, that is why he is testing, वरना क्यों टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो टेक दैट थिंग पॉजिटिवली। और बाकी कमांड टास्क में नॉट ओनली दैट, यू आर आल्सो कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट्स, जब आप सबऑर्डिनेट होते हो, ठीक है। उसमें एक चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट गिव आइडियाज जब तक जीटीओ आपके कमांडर ने लाउडली क्लियरली नहीं बोला। वो इशारे देगा आपका जो कमांडर, बता बता बता, नहीं बताऊंगा, कमांडर को समझ नहीं आ नहीं। रहा, बोल रहा है भाई हाँ धीरे से कुछ हाँ, बता दे, लगा दे खुद से फट्टा नहीं बल्ली। नहीं नहीं, बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर जॉब, एंड अगर जीटीओ ने ये करते हुए देख लिया आप ही का नेगेटिव है, राइट। डू नॉट डू दैट वट एवर योर कमांडर इज सेइंग, ठीक है, डू इट उसी हिसाब से। अगर उसने बोला कि पुट द प्लैंक, कहाँ कहाँ रखना है भाई ये तो बताओ, ठीक है। ये नहीं कि पुट द खुद ही प्लैंक लगा एंड देन दिया, टाई द रोप, हाँ तो आपने पूरा सॉल्यूशन दे दिया, कि नहीं, ओवर ठीक है। स्मार्ट बनने की जब कोशिश। हाँ हाँ, ये भी नहीं करना। और अगर आप वो बोलता है जीटीओ, तो इन माय केस व्हेन आई वाज अ सबऑर्डिनेट, सो द कमांडर ही वाज नॉट एबल टू गेट एन आइडिया, तो ही द जीटीओ सेड दैट यू कैन आस्क योर सबऑर्डिनेट्स, देन ही आस्क्ड अस, मैंने 2 सेकंड में आइडिया दे दिया। डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको बोला गया है कि आइडिया दो, तो यू शुड नॉट बी पोर्ट्रेड इन सच अ वे कि जीटीओ सोचे कि ये तो बस खड़ा है, ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा है टास्क में, ठीक है। व्हेन यू आर अ ध्यान पूरा सबऑर्डिनेट, होना चाहिए। हाँ, so you should listen to your commander, but when it is your turn to give answer, answer आना चाहिए आपके, solution निकलना चाहिए। So that is the conduct of a subordinate. Do not speak anything अपने मन से जब तक पूछा ना जाए, ठीक है। Do whatever he is saying, अपने मन से कुछ मत करो। चलो ठीक है, तो अच्छा, कमांड। adding one more हम्म। thing, this is bit of small talk before the command task. हाँ। GTO talks to you a bit. तो उसमें the key is answer honestly,
and whatever you have told in your interview, in your PIQ and in your SD, वो सेम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि PIQ में कुछ बोला, मैच होना चाहिए। SD में कुछ लिखा है, इंटरव्यू में कुछ बोला, यहाँ कुछ बोला, ये नहीं हम्म। होना चाहिए। बाकी इट इज नॉर्मल क्वेश्चंस, कहाँ से हो, हम्म। कितने अटेम्प्ट हुए, बेसिक स्टफ, नथिंग मच टू प्रिपेयर फॉर। ठीक है। चलो फिर कमांड टास्क अपना हो जाता है, फिर कमांड टास्क के बाद आता है अपना आखिरी टास्क ऑफ जीटीओ, दैट इज एफजीटी, फाइनल ग्रुप टास्क, विच इज सिमिलर टू आर पीजीटी एचजीटी। तो अप्रोच तो वही सेम ही रहता होगा तेरा, इसमें भी सारे रूल्स भी वही रहते हैं सब इसमें कुछ। इसमें इफ यू हैव डन वेल इनफ ना, तो एफजीटी डजंट मैटर बहुत ज्यादा। ठीक है, तो गिव अ नॉर्मल कंट्रीब्यूशन। मैंने तो क्या किया था, आई वाज इन सेंटर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, मैंने तो कोई लोड लोड भी नहीं उठाया, ना ही बल्ली पास करी, बस पीछे से भीड़ मुझे आगे भेज रही थी, धक्का मैं मार लगा रही था। थी। आई डिडंट डू एनीथिंग इन माय एफजीटी, बट आई एम नॉट सेइंग कि कुछ मत करो। ठीक है, बेसिक अपना, अगर कोई बोल रहा है कि टाई, तो टाई कर दो। ठीक है, वॉलेंटियर करो कि मैं आगे चले जाता हूँ। ठीक है, और गिव आइडियाज इफ द ग्रुप इज स्टक, बट ऐसा नहीं कि अभी भी लगे पड़े GT3 की तरह सारे आइडियाज हम ही नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। तो GTO has already assessed you, he has been with you for 1.5 day। ठीक है, he has made an image for you and he has written remarks on you। ठीक है, do not give him chances कि वो अपना मन मत दो, पता चला सेलेक्ट कर रहे थे, कुछ दिखा दिया आपने FGT में, उसने डिमोट कर दिया। कोई रेड ये मत फ्लैग करो दिखा बस। दिया तुमने। हाँ, इतना मत करो, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। ये यू गिव अ नॉर्मल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग जीटीओ अपना कंप्लीट करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग वन ऑन वन पर्सनल इंटरव्यू पे। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग एक ऑफिसर के साथ अकेले होते हैं उस कमरे में, तो ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि आप कैसे उस राइट। ऑफिसर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज देखी है कि प्रद्युमन में भी बहुत मतलब कॉन्फिडेंट रहता है वो। ठीक है, जब भी आंसर करता है क्लैरिटी के साथ बात करता है। ठीक है, और जब मैं तेरे से भी बात करता हूँ तो सेम ट्रेड्स हैं। ठीक है, ये तूने कैसे डेवलप किया, ये मैं पर्सनली तेरे से जानना चाहूंगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। और तेरा अप्रोच क्या रहता है पर्सनल इंटरव्यू को लेकर?